मोदी जी। Honorable members, under proviso to Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, I have permitted the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023, listed in today's revised list of business at serial number 7D after mediation bill 2021, to be taken up first for consideration and passing. Statutory resolution, Shri Pankaj Chaudhary to move the resolution, following resolution. मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं जनहित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 का 1 के अनुसार राज्य सभा द्वारा अधिसूचना संख्या 40/2023 सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2023 469 आ दिनांक 30 जून 2023 और अधिसूचना संख्या 43/2023 सीमा शुल्क दिनांक 1 जुलाई 2023 की 473 आ दिनांक 1 जुलाई 2023 के अनुमोदित करती है। इनका उद्देश्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है। Resolution moved. Any member desiring to speak may do it after Minister's reply. Honorable Minister. Reply. I shall now put the statutory resolution moved by the Minister to vote. The question is, those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is adopted. Shri Arjun Ram Meghwal to move for leave to introduce Advocate Amendment Bill 2023. Honorable Chairman Sir, with your permission, I move for the leave to introduce a bill further to amend the Advocate Act 1961. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Arjun Ram Meghwal. Sir, I introduce the bill. Thank you. Shri Anurag Singh Thakur to move for leave to introduce the press and registration of periodicals bill 2020. Honorable Chairman Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill, the Press and the Registration of Periodicals Bill 2023, to provide for press registration of periodicals and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Anurag Singh Thakur. I introduce the bill, sir. Shri B.L. Verma to move a motion for consideration of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023. आदरणीय सभापति महोदय, सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद पहली बार मुझे ये बिल लोकतंत्र के सर्वोच्च मंत्र के समक्ष रखना सौभाग्य की बात है। आदरणीय सभापति महोदय, देश जब आज अमृत महोत्सव आजादी का मना रहा है, आने वाले 25 साल देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का है। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार में पहली बार मंत्रालय की आवश्यकता को देखते हुए मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया और सहकारिता मंत्रालय ऐसे हाथों में
देने का काम किया, जो बड़े और कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। आदरणीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन, उसको पूरा करने के लिए लगातार मंत्रालय हमारा काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि देश के स्वभाव को सहकारिता आंदोलन एकदम अनुकूल करता है और हमारे मूलभूत चिंतन स्वभाव संस्कार के अनुकूल व्यवस्था है। ये उधारी लिया हुआ विचार व्यवस्था नहीं है। और सारी व्यवस्थाएं अगर हम लाते हैं तो उसमें विदेशी तत्व है, स्वाभाविक रूप से रेसिस्टेंस सिस्टम रहता है। और हम तो यहाँ पर सांसद बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जैसा कि हम जब कृषि का काम करते हैं तो खेती के काम में बुआई का समय आता है, कटाई का समय आता है, उस समय हम श्रम शक्ति को बढ़ाने के लिए आपस में मिलजुल कर इसे हम काम करते हैं। सम्मानित सभापति महोदय, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए मैं आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि हमने इस विधेयक को लाने के लिए विस्तार से लोगों से परामर्श किया। प्रस्तावित संशोधन पर मंत्रालय में हुए गहन विचार विमर्श और केंद्रीय मंत्रालयों राष्ट्रीय सहकारी समितियों के साथ परामर्श किया। 28 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों 13 राष्ट्रीय सहकारी समितियों से सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें विचार करके उपयुक्त तरीके से शामिल करने का काम किया है। इस बिल को हमने इंट्रोड्यूस करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी भेजा। ज्वाइंट कमेटी की 8 बैठकें हुई, जिनमें से विधेयक प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि सभी से हमने परामर्श लेने के बाद और उसमें कहीं कोई किसी का संशोधन नहीं हुआ, और हमारे लिए ये बिल आज लाने के लिए मुझे हर्ष का विषय है। और मैं कह सकता हूं कि इसमें इस प्रकार के प्रावधान इसमें रखे गए हैं जो हमारे शासन को, सहकारिता के शासन को मजबूती मिलेगी, इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही इसके लाने से बढ़ेगी, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने का काम होगा, 97 संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार संशोधन करने का काम भी होगा। और माननीय अध्यक्ष जी, इस मल्टी स्टेट बड़े बिल में मैं कह सकता हूं कि जो पहले अनियमितताएं आती थी उनको भी हम दूर करने का काम करेंगे। ये अनियमितताएं इस प्रकार की थी, इसमें वित्तीय गबन के मामले आते थे, चुनाव कराने में विलंब होता था, विवाद के मामले आते थे, ऑडिटर्स का पक्षपात चयन होता था, भर्तियों में पक्षपात होता था, सदस्यों के सक्रिय प्रतिभागिता की कमी होती थी। आज जैसी शिकायतों के कारण से हमको इस बिल लाने की आवश्यकता पड़ी। तब माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल के सभी प्रस्तावित प्रावधानों को बिना किसी अमेंडमेंट के स्वीकार भी किया है, और इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज हम बिल लेकर आए हैं। और आज मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved. There is one amendment by Dr. John Vitas for reference of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Sir, I move, sir. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Niranjan Bishi. Mr. Derek O'Brien. One second. Take it. Thank you. But let everyone be on the seat. One second. Yes. Sir, while I am very keen to invoke former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. What is your point of order? 260. Mr. Derek? Professor Prime Minister Vajpayee, on what he said,
I will not speak today till you allow the leader of the opposition to speak. He has to be given a chance to speak. Why is it the leader of the opposition speaking? I will not speak. Let him speak first. Honorable members, No, sir. He has been waiting for 2 hours, it is sir. most unfortunate, Sir, unparliamentary, This is debating, ignoble that you choose to raise point of order and then you say nothing will go on record. Nothing will go on record. One second. Mr. Derek O'Brien, if you will see over the years your effective contribution, you will be surprised. You got up, took the floor, take a seat. In the name of raising a point of order, you deviate yourself. Transgression. I deprecate it. It is unparliamentary. It is unbecoming of a member. We don't expect a member to go to that extent. You are immediately functional outside the house. Here you don't make any substantive contribution. You are required to make contribution here. I don't allow it. Sri Niranjan Bishi. Honorable Chairman, sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2023, which was introduced in the Lok Sabha on 7 December 2022. The bill proposes to amend Multi-State Cooperative Societies Act 2002 in light of 97 Constitutional Amendment Act of 2011, which inserted Part 11, Part 9B. Sir, cooperative banks are financial entities established on a cooperative basis and belonging to their members. This means that the customer of a cooperative bank are also its owner. These banks provide a wide range of regular banking and financial service. Cooperative are organizations formed at the grassroots level by farmers to ensure the power of collective bargaining towards a common goal. The aim of cooperative movement was to help farmers overcome the burden of debt and help them to sell their product easily to get maximum profit. In banking and finance, cooperative institutions are spread across rural and urban areas. Village level packs formed by farmers associations are the best example of grassroots level credit flow. These societies anticipate the credit demand of a village and make the demand to the DCCB. Their packs are a collective bargaining of farmers. They have much more bargaining power than an individual farmers. It established the right to form a cooperative society as a fundamental right. It included a new directive principle of state policy on the promotion of cooperative society. It added a new part IXB to the constitution titled the Cooperative Societies. It authorized the parliament to establish relevant laws in case of multi-state cooperative societies and state legislature in the case of other cooperative societies. The Principal Act provides that an application for registration of multi-state cooperative society and its bylaws shall be disposed of by the central register within a period of 4 months. But the Amendment Act proposes to reduce this period of 3 months. Section 41 of the Principal Act stipulates that every multi-state cooperative society shall have a board of directors comprising maximum 21 directors, 2 co-op directors and functional directors in the National Cooperative Society. But the amendment provides that out of 21 directors, 1 member shall be scheduled caste or scheduled tribes and 2 shall be women. The 2 co-op members shall have experience in the field of banking, management, cooperative management and finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by such multi-state cooperative society. They shall not have the right to vote in any election of the office bearer or be eligible to be elected as office bearer of the board. The bill also excludes such directors of the multi-state cooperative society from being present in the discussion or voting any contract in which they may have direct or indirect interest. The Amendment Act now seeks to substitute this provision and establish the Cooperative Election Authority comprising of a chairman, vice chairman and maximum 3 members appointed by the central government to bring
electoral reform in cooperative sector. Section 45A to 45L deal with the appointment power, function, removal, resignation, vacancy, etc. in the authority. The Amendment Act seeks to insert a new section 63A relating to establishment of the Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund for revival of sick multi-state cooperative society. It provides that multi-state cooperative society which are in profit for the preceding 3 financial year shall annually credit 1 crore rupees or 1% of their net profit, whichever is less, to such fund. Center will constitute a committee to administer this fund. Honorable members, honorable members, undoubtedly, leader of the opposition has a very significant position. Over the last 8 days, it has been a scenario that whenever sensing mood of the house, that leader of the opposition must hold the floor, and I allowed him to avail that opportunity. Every time I have verified from the record, it is the same refrain. Now you said don't tell lie. I don't appreciate it. That is not the approach. That is not the approach. The honorable member should be careful about the words he uses. So I have discussed, one second, I have discussed with the honorable LOP, with the floor leaders, with leader of the house, extensively. I find this platform, which is required to be utilized for listed business, is sought to be transgressed. Imagine my plight, a decision which I have taken, every day the same issue being reiterated. There was an occasion, honorable members, I had indicated to all the leaders, I will have discussion on Manipur beyond 2.5 hours till midnight. You did not avail the opportunity. If I give the floor, same thing will happen. In the process, I will not be able to transact the listed business. Mr. Gupta ji, you can keep your phone down. No, but don't put it like this, you see. The minimum decorum we owe to this house is to handle our phone in a dignified manner. I'm already seized of a matter which is embarrassing to all of us. So we never know. Instruments are instruments at the end of the day. I have avoided a very serious inquiry that could go outside this house because I'm extremely alive and sensitive to our own dignity. We have to deal with it as in-house mechanism. Personally, let me tell you, I have highest regard for LOP. There are not many people in the country who can match his exposure. But I have great pain when I say every time the honorable, and one thing, may I appeal to the honorable members, leader of the opposition does not need anyone else to indicate to me that he needs to apply. He does not. The honorable member may resume his address. Thank you, Honorable Chairman, sir. The Multi-State Cooperative Society Bill proposes a new Section 70A relating to concurrent audit for multi-state cooperative society having an annual turnover or deposit of more than an amount as determined by the central government. The amendment also seeks to insert a new chapter. Honorable member, you'll resume later on.
Sir, Sir, before I you am say- thankful sir, to you. sir, sir, At sir. least you allowed me to One speak. second. Sir, 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 one let me- second. Before you speak, sir, 1 second. May I plead with you, sir, that every time I have acceded to your request, your input has been the same. No, no, no. I have given nearly 9 points why this discussion should take place. Yes. Why Prime Minister should come here. I have stated everything. Sir, I have In the stated process, this. in the And process, also- nothing will No, go on record. and In the also- process, sir, in the process, my considered decision, which I have given to the House, is being ignored. This is nothing but the method to challenge my decision. Sorry, I can't. Please go ahead. Honorable member. Thank you, sir. The amendment also seeks to insert a new chapter 9A relating to redressal of complaints. It makes provision for appointment of one or more cooperative ombudsmen by the center or inquiring into the complaints made by the members. It also proposes to enhance monetary penalties or multi-state cooperative societies for contravention of the provision of the Act and the rules made thereunder. Article 243ZH and Article 243ZI in Part 9B of the Constitution distinguish between cooperative society of the state and multi-state cooperative society which is governed by Union of India. No provision of the Constitution makes way for merging a cooperative society which is incorporated under state law with a multi-state cooperative society. However, through clause 6 of the bill, the center is indirectly encroaching into right of state cooperative society. Clause 6 creates an ambiguity by allowing any cooperative society to merge into an existing multi-state cooperative society. This is beyond legislation competence of union as state cooperative society are within exclusive jurisdiction of state. Clause 13 prohibits redemption of shares of multi-state cooperative societies without center's approval. This strikes at heart of principle autonomous functioning of cooperative society, which the 97 constitutional amendment sought to introduce. Clause 17 devotes the object of Parent Act by appointing Central Election Authority to be appointed by the central government. Clause 24 seeks to create a fund putting an additional burden on cooperative society and it affects their autonomous functioning. Sir, clause 45 makes provision for overriding board of directors and appointing an administrator who may not be a member of the society and thus contravenes 97 Constitutional Amendment Act. Sir, there are certain technical issues in the bill. Honorable member, continue. Sir, thank you, sir. There are certain technical issues in the bill and it is against the spirit of the definition of cooperative society as enshrined in the Constitution and will strike at the heart of the autonomy of cooperative society. Sir, the bill seeks to take away the rights of the state government and is against the federal structure of the country. The amendment bill must address all concerns before it can be passed as a law. With this, I, along with my party Biju Janata Dal and my leader, Sri Naveen Patnaik ji, our popular Chief Minister ji, we support the bill and thank you, sir. No, sir, frankly, sir, I appreciate your meditation. I was just making you aware of surroundings all around. Do listen to our appeals. Nothing will What do we go. do? Mediation, the only falling back is meditation. Sir, the point is that though you had a good solution, none followed you. They could have got into the meditation forum. They did not follow you, sir.
I thought for the good relationship we enjoy all throughout for decades, let me remind you the surroundings of To us. Will you listen to us? honorable Not members, listen to us. honorable members, such an important bill that brings to the fore concern of SC and ST. It was a historic constitutional amendment that cooperatives were elevated to constitutional level and a new ministry had been formed. Cooperatives are game changer. They help the small worker, artisan, farmer to get together and have rich dividends. On such an important issue, primarily the focus was on SC and ST concern also. Such kind of walkout is not appreciated. Further, I realize the importance of leader of the opposition. But honorable members will kindly note and go to the record. Right from 20th of July till date, every time I have given an opportunity to the leader of the opposition to make his contribution, the contribution has been tangential. The contribution has been, in a sense, challenge to my decision. I have suffered this pain that a decision which I have taken consciously is sought to be challenged by them by having numbers for the same issue. The minimum respect we can show by sense of propriety and decorum is to believe in the decision of the chair. And honorable members, let me indicate to all of you, I have spared no effort to interact with the leaders individually and collectively. I have indicated to them on a number of occasions their demand that the Honorable Prime Minister be here does not have any constitutional premise. I indicated to the honorable members, the floor leaders, that a distinguished member of parliament, Sitaram Yechuri, he raised the issue in 2014. He raised the issue in categorical terms. And there was a directive of the chair, a decision of the chair. And the determination that emanated from the chair was, this cannot be done. If you examine, honorable members, the constitutional prescriptions, you all have taken along with me the oath to abide by constitution. There is principle of collective responsibility. In that premise, to make an endeavor of this nature at the cost of public interest, just to score brownie point. And I have some of the members, I particularly refer to Mr. Derek O'Brien. He availed the opportunity to raise a point of order. And his point of order was, give leader of opposition an opportunity to be heard. In the process, he has insulted two institutions. One, institution of leader of opposition. In his wisdom, he thinks on his own leader of opposition is not competent. In his wisdom, he thinks leader of the opposition does not have that power, authority, or personage to attract my attention. And secondly, in the process, he has done another unwholesome activity. He is trying to broker between me and leader of opposition that I should give him the floor. I have repeatedly told honorable members this side, please do not come between me and another member. Every member of this house is important, holds a position in his own right. He has the same vote as anyone else has. I would again appeal to all of you. Please get in touch with your friends. Try to introspect, like it or not, to the outside world. We have become absolutely irrelevant. Are we to be part of this august house and ensure that it gets into the domain of irrelevance? If we don't debate,
if we don't discuss, we don't deliberate, trust me, things will be debated elsewhere. Manipur is a case in point. I took no time in exceeding my consent to the notice under 176 on Manipur issues. Leader of the House immediately said, we agree for a discussion. I fixed date, I fixed time, I got issued a supplementary list of business. I indicated to the leaders in my meeting that 2.5 hours is a limitation which I would relax. And I will not have an upper limit of time. We will discuss and deliberate Manipur for as much time as the honorable members want. That opportunity was not availed. It defies common sense, logic, rational. We want to do it under 267. In the process, they want me to revisit my decision, which I had declined on a number of occasions. So honorable members will continue with legislative business, but do please use your good offices. Reach out to your friends. Reach out to anyone who cares for Indian democracy. And let us have an ecosystem whereby everyone can make contribution. I am pained and surprised every morning when members who occupy public space make no substantive contribution here. I have pointedly indicated to Mr. Derek O'Brien today. Would he indicate the substantive contribution made in the House? We have legal luminaries, we have stalwarts, we have people with great exposure and experience. They don't aware. It was absolutely sickening for me to notice that you raise concerns of the people by way of questions. You are lucky to have your question in the ballot as a start question. And you are not present to discharge your minimum duty to the people. You are failing to discharge minimum courtesy to parliamentary democracy to at least ask the question. I do hope all of you will take it as a mission. Reach out to opinion makers, influencers, so that we as a body act in a manner exemplifying our actions which are worth emulation by others. Next speaker, Sri S. Niranjan Reddy. Time is 8 minutes. Thank you, Deputy Chairman, sir. I thought I'll get to speak. Yes. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I rise to support the bill because this is in continuation of a constitutional amendment that was made in 2012 by the 97th Amendment. So most of the provisions, sir, are bringing this cooperative, multi-state cooperative societies act in tune with the constitutional requirements that require the governance of cooperative societies. So the 97th Amendment of the Constitution makes provisions in respect of cooperative societies. Now these cooperative societies would have to be governed in terms of the constitutional requirements. So for multi-state cooperative societies earlier, there was a lacuna because this could not be provided for in the way the Constitution wanted the composition to be. Sir, there was a concern expressed by quite a few members that possibly this multi-state cooperative society encroaches into the area of the state government. Sir, I may want to differ with certain concerns expressed by my preceding speaker, Sri Niranjan ji, because I was a part of the joint parliamentary committee. Even in the committee that I had spoken, I had explained that the Constitution makes a clear distinction between cooperative societies that have their objects in one state.
then the state would have the complete authority to deal with such cooperative societies by making a law, because it is a state subject. But the constitution itself specifies that any corporation, which Supreme Court has now clarified will also include a cooperative society, if it has objects in more than one state or has operation in more than one state, then it is the central government alone that needs to make a law. So while I am someone who is a strong votary of the state rights ordinarily, I find, sir, that this particular amendment does not breach the constitutional requirement of not encroaching into a state power. But having said that, in fact, sir, this bill also takes care to say that if there is a cooperative society registered under a state law, which is going to be merging with a multi-state cooperative society, the merger of the state cooperative society would be done in accordance with the state law only. So I may want to just allay some apprehensions of some of the members that this possibly may encroach into the state's domain. Sir, then the third point that I wanted to highlight is the reason my party and I rise to support the bill is because this is encouraging the framework of multi-state cooperative society, and it also provides, sir, for, as the Honorable Chairman, sir, had mentioned, for the composition now to include members of scheduled castes and scheduled tribes, because the Constitution by an amendment said you must have a cooperative society which should mandatorily have people from the scheduled caste and the scheduled tribe. The amendment now, sir, brings in that feature, making it mandatory that in any multi-state cooperative society, the composition must be in terms of what the Constitution provides. Sir, the amendments also provide for better administration of cooperative societies, because it provides for a concurrent audit, which means, sir, that earlier we have seen cases where multi-state cooperative societies were giving a self-serving audit, which was keeping things in the dark, eventually led to certain collapse of some multi-state cooperative societies, including certain banks, which has resulted in great magnitude of loss to investors. Sir, now this society's law specifically provides that there would be a separate concurrent audit that must be mandatorily done. It provides, sir, for a cooperative ombudsman who would be able to take care of complaints that are made in respect of every cooperative society. So the last of the features that I just wanted to quickly touch upon as to why we support the bill is it also provides that in terms of the Information Act, a cooperative information officer would be appointed who would ensure a free flow of information, sir, from the cooperative society and with regard to the affairs of the cooperative, multi-state cooperative society to whoever is seeking information. This will ensure greater transparency. Sir, in all, the bill provides for greater accountability, provides for greater transparency, makes it sync and align with the constitutional requirements. And I would think, sir, that this bill is actually being made maybe after 11 years to bring the multi-state cooperative societies in line with the constitutional requirements. So I therefore support the bill, and I thank you, sir, for giving me the opportunity. Thank you. Yes, Niranjan Reddy ji. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Please. धन्यवाद उपसभापति महोदय। भारत सरकार ने आज लोकसभा में पारित मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल यह लाया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। सर, सहकार यह भारत की आत्मा थी, यानी ग्रामीण इलाकों में तो पानी की व्यवस्था करने के लिए भी सहकार ये निर्माण किया जाता था, और बहुत सारे जो ग्रामीण किसान रहते थे उस सहकारिता के माध्यम से खुद के खेत को पानी देना या खेती करना करते थे। 115 साल से यह सहकारिता की अभी हिस्ट्री जो है उसमें सहकारिता का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इस वक्त यह सहकार से समृद्धि यह नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने दिया है, और हमारे सहकार मंत्री अमित जी शाह सहकार से समृद्धि लाने के लिए अमृत काल में कार्य कर रहे हैं। यह बिल मैं समझता हूं
उसमें डाला हुआ एक सक्सेसफुल कदम है। यह सहकार से समृद्धि उसी वक्त हो सकती है अमृत काल में, जब ग्रामीण इलाकों का गरीब किसान, मजदूर, पशुपालक, फिशरमैन, यह सब सहकार की व्याप्ति में आ सकते हैं। आदिवासी समुदाय रहे, अनुसूचित जाति का समुदाय रहे या महिलाएं रहे, वह जो काम करती है वह भी सहकार के कक्ष में आए, यानी सहकार में आने वाले लोगों की व्याप्ति बढ़े, वह सर्वव्याप्ति बने, सर्वस्पर्शी बने। उसके लिए सहकार में सुधारना करना बहुत जरूरी था। हमारे यहाँ तो सहकार की इतनी खराब कंडीशन थी कि सहकारी संस्थाएं तो हमारे यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा है जो ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन केंद्रीय स्तर तक सहकारिता मंत्रालय नहीं था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी के रूप में जो गुजरात से जैसे सहकार के स्टेट से आते हैं, सहकार में पले हैं, बड़े हैं, उनको उसका नेतृत्व दिया। और उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया कि 1,48,000 जो सहकारी संस्थाएं हैं उसका डाटा कलेक्शन का काम किया और उसके लिए जितना पैसा लगे, अभी आज की कंडीशन ऐसी है कि 90% सहकारी सोसाइटी उसमें पैक्स है, वो सभी सहकारी सोसाइटी का डाटा कलेक्शन हुआ है। लेकिन हमारे भारत में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यह एक बड़ी संज्ञा है। आज इफ्को या अमूल के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलता है, अमूल के माध्यम से किसानों को रोजगार मिलता है। एक आध बार एनवायरमेंटल कंडीशन खराब भी हुई तो उसके घर में पैसा जाता है। इफ्को के माध्यम से तो आज हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां किसानी में, खादों में जो रिसर्च नहीं कर सकी थी वह इफ्को ने करके बताई है। आज नैनो यूरिया रहे या डीएपी रहे, वो नैनो पार्टिकल के द्वारा छिड़कने का काम जो किसानों को उसका वरदान मिला है वो इफ्को के द्वारा किया है। इसलिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है वह निरंतर एक रेगुलेशन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि बिना सहकार नहीं है उद्धार, लेकिन सहकार से स्वाहाकार भी बड़ा बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारे बार तो देखा गया है कि सहकार कुछ फैमिलीज के लिए रिलेटेड हो जाती है, कुछ फैमिलीज का वो संपत्ति का स्रोत बनती है और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सभी लोगों का उसमें इंक्लूजन हो। इसलिए यह सहकार का क्षेत्र है, चाहे वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव रहे, विलेज के कोऑपरेटिव रहे, वह एक रेगुलेशन में आना बहुत जरूरी है। माननीय उपसभापति महोदय, ऐसी कंडीशन हो गई थी कि बहुत सारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन ही नहीं लगता था और बिना इलेक्शन सालों साल वो चला रहे थे और उसमें रिप्रेजेंटेशन गरीब आदमी का, किसानों का या महिलाओं का या अनुसूचित जाति का नहीं था। और यह बिल में एक 5 तंत्र जो दिए हैं, एक तो बोर्ड मेंबर का इलेक्शन कैसा हो, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एमलगेमेशन कैसा हो, तीसरा सिख कोऑपरेटिव सोसाइटी रहे तो उसका फंडिंग कैसा किया जाना चाहिए, उसका रिवाइवल कैसा किया जाना चाहिए, चौथा गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग जब रहता है, कभी कभी कुछ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका यूटिलाइजेशन गलत तरीके से भी कर सकती है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन कैसा रहना चाहिए। और कंप्लेंट्स कोई भी करे, जो भी सदस्य है, जो भी शेयर होल्डर है, उसका रिड्रेसल, उसके बारे में न्याय मांगने की प्रक्रिया वह भी वो शेयर होल्डर को मिलनी चाहिए। यह 5 चीजें यह बिल में दी गई है जो पहले कभी नहीं थी। इसलिए यह अमेंडमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि बोर्ड मेंबर का इलेक्शन करने के लिए वह सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना ही इलेक्शन होल्डिंग कमेटी बनाती थी और खुद की इलेक्शन होल्डिंग कमेटी, तो कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। इसलिए यह इस एक्ट में
कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी निर्माण करने का प्रावधान किया है। यह कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी यह इलेक्शन कंडक्ट करेगी, यह इलेक्शन सुपरवाइज करेगी, डायरेक्ट करेगी और इलेक्टोरल रोल यानी कौन मतदार है उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, तो कौन मतदार है वो मतदारों की सूची निर्माण करने का भी काम करेंगे। यानी इलेक्शन लेने का पूरा जिम्मा यह केंद्र सरकार से निर्माण किए गए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के माध्यम से होगा। यानी बोर्ड बनाते वक्त भी पारदर्शिता अच्छी तरह से आ सकेगी। इस बोर्ड में महिलाओं के लिए भी 2 सीट आरक्षित किए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किए। बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड बनने के लिए सदस्य अयोग्य रहता है, कोई दिवालिया कंपनी का निदेशक रहता है, लेकिन उसको भी वहां पे बोर्ड का सदस्य बनने के लिए दबाव के कारण, विभिन्न दबाव के कारण वह फॉर्म भरता है। इसलिए रेगुलेशन में कौन अयोग्य है, किसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, यानी ऐसा अयोग्य सदस्य रहा तो 1 साल के लिए नहीं तो 3 साल के लिए अयोग्य करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। विशेषज्ञ जो रहते हैं वो चाहे चुन के आओ ना आओ, लेकिन 2 लोगों को कोऑप्ट करने का भी प्रावधान इस संरचना में किया गया है। उसके वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई टेक्निकल नॉलेज देना हो, कोई अकाउंटिंग का नॉलेज देना हो, कोई आईटी सेक्टर का नॉलेज देना हो, कोई एडवर्टाइजिंग सेक्टर का नॉलेज देना हो या व्यापारी का नॉलेज देना हो, तो वह सब नॉलेज इस कोऑपरेटिव सेक्टर में कोऑप मेंबर के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे चेयरमैन ऐसे रहते हैं कि वो कभी बैठक ही लेते नहीं। हाँ, प्रावधान है कि साल में एक जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो उसको भी मानने को तैयार नहीं रहते। तो मिनिमम 50% सदस्यों ने मांग की तो सीईओ द्वारा भी बैठक कराई जा सकती है और उसके वजह से एक रेगुलेशन फॉर द बोर्ड एक्टिविटी यह भी इस बिल के माध्यम से लाया गया है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी होती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब सिक हो जाती है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता और उसको बचाने के लिए प्रावधान इसमें दिए गए कि नॉन वोटिंग शेयर्स भी यह कोऑपरेटिव सोसाइटी निकाल सकती है। ये नॉन वोटिंग शेयर्स के माध्यम से यानी एक लेंडिंग जैसा प्रकार है कि इसके माध्यम से वो सोसाइटी के ऊपर पैसे देने वाला कैप्चर तो नहीं कर सकता, लेकिन सोसाइटी का कैपिटल डेफिनेटली बढ़ा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल सोसाइटीज है वह सोसाइटीज के मुनाफे से 1% या तो 1 करोड़ मिनिमम ऑफ दैट उसका एक फंड बना के पूरे नेशनल लेवल पे फंड बना के वह फंड में से जो सिक सोसाइटी है उसको हेल्प करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी जो भी कमजोर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होगी, जो भी सिक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, वह सिक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बचाने का, रिवाइवल करने का प्रावधान पहली बार यह बिल में किया गया है। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग का रिडिम्टेशन करना यह भी बड़ा मुद्दा था। जब गवर्नमेंट खुद के शेयर उसमें डालते हैं तो गवर्नमेंट के शेयर जो कैपिटल में है उसको ट्रांसफर करना, उसको रिडीम करना और उसकी परमिशन गवर्नमेंट की लेनी चाहिए कि कौन से प्रकार से वो उसका उपयोग करने वाले हैं, वह भी इसमें किया है। और सबसे आखिरी में रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स, क्योंकि जो भी हर एक सदस्य रहता था उसके ऊपर अन्याय हुआ तो किसी के पास जाना उसका प्रावधान अभी तक नहीं था और यह प्रावधान एक ओम्बड्समैन निर्माण करके और उसके अंदर पूरी यंत्रणा करके यह बिल में किया गया है। इसलिए कोई भी जो भी वंचित रहे, जिसके ऊपर अन्याय हो, उसको न्याय दिलाने की यंत्रणा यह बिल में दी गई है। इसलिए सहकार के क्षेत्र में सहकार स्वाहाकार न हो, सहकार से उद्धार हो, सहकार से समृद्धि हो, इसके लिए लाया गया ये बिल है। सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। ग्रामीण इलाकों में इसका ज्यादा स्वागत होगा, सभी स्टेट में स्वागत होगा, इसलिए मैं समर्थन करता हूं, सरकार का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अनिल बोंडे जी।
Honorable Dr. M. Thambidurai. Please. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir. The bill introduced by the government is a good intention. They have brought this kind of multi-state cooperative society amendment bill. Under the leadership of Modi ji and also Amit Shah ji, they are very concerned about that how the cooperative society has to be function. That is why that they have brought this kind of bill, multi-cooperative societies. I want to mention, sir, as chairman of the Rajya Sabha mentioned, this is very important bill that how our people must be involved, not from rural area up to town, municipal area, corporation area, must mingle together. And in a cooperative way, we have to run so many programs. That is the spirit of the bill, to develop all areas. That is, sir, for example, even as our former colleague said, it is not encroaching the state government's purview, because state government, state society, cooperative societies are under the control of the state government also. Therefore, the amendment, which is not affecting that way, that is why I am ready to support this bill also. Second, sir, in Tamil Nadu, which is cooperative society is very successfully done. Previous, that our ADMK party, headed by Edapadi Palaniswamy, he was the chief minister for 4 years. At that time, he conducted the elections for the cooperative society in Tamil Nadu. For 5, that term is for 5 years. His good intention, properly democratic way, the election conducted by our government in Tamil Nadu, at Edapadi Palaniswamy did a good thing. But the present government, in order to nullify this kind of election, which successfully done democratically, they brought a bill in this assembly, making 3 years tenure. But it is not, luckily, our governor has not given the consent, but the intention of the present ruling party of Tamil Nadu is not good, because when the people are elected like that, society, that cannot be disturbed there, because this is the spirit. Because now the government is, central government bringing such a kind of bill. Very senior member. No, good. I only to, I'm not, because I am supporting that. I'm not any, because I said what is happening because we are regional party, at the same time we have to say something about our state also. We have the federal system, because we are representing states here, Rajya Sabha. It's a Rajya Sabha. Therefore, I have to mention certain things, what is happening there. Therefore, I am supporting this bill, because I don't want to take much of the time, as you have very special permission, because I attend southern meeting also. But I appreciate our Modi ji and Amit Shah ji, which have brought this kind of a bill. Our ADMK party supporting this. Thank you. Thank you, Dr. M. Thambidurai ji. I will have a small request. All the time you have meeting at 3, so kindly ask them to change. Please. Honorable Vijay Pal Singh Tomar ji. Honorable Mani Vijay Pal Singh Tomar ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मान्यवर, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ प्राचीन काल से सहकारिता ग्रामीण क्षेत्र में एक जीवन का अंग बनी रही है। उदाहरण के लिए आधुनिक मशीनों के आने से पहले कुओं की खुदाई होती थी, छप्पर का उठाना होता था, और गांवों में चाहे रहट चलाना हो या बुआई करनी हो या गुड़ाई करनी हो, सारे काम आपस में मिलकर करते थे। ये सहकारिता का एक बड़ा उदाहरण था। बाद में सहकारिता अधिनियम बनाकर एक कानूनी जामा पहनाया गया। 2002 में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम आया, जो एक से अधिक राज्यों के सदस्यों के हितों की सेवा करने वाली सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है। उसमें संशोधन के लिए ये 22 वाला ये बिल लाया गया है। मानव आज भारतवर्ष में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनकी सदस्यता लगभग 29 करोड़ से भी अधिक है। मान्यवर, सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, जहां करीब 2 लाख से अधिक समितियां हैं और 5 करोड़ सदस्य हैं। राज्य का विषय होने के बावजूद कुछ सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनका कार्य एक से अधिक राज्यों में चलता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां एक चीनी मिल है, रुद्र विलासपुर चीनी मिल।
उत्तर प्रदेश का गन्ना भी लेती है, यहाँ के किसानों का, और उत्तराखंड के किसानों का भी लेती है। इसी तरह से कर्नाटक, महाराष्ट्र में दोनों राज्यों से इस तरह से गन्ना लेने का काम करती हैं। आज भारत में 1435 बहुराज्य सहकारी समितियां कार्यरत हैं। वर्तमान बिल में बहुराष्ट्रीय समितियां बोर्डों के चुनाव प्रक्रिया में सुधार के साथ साथ इन समितियों को बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। महोदय, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में किसानों के जीवन में एक बहुत बड़ा सुधार, रोशनी आने वाली है इसके द्वारा, क्योंकि किसान को 3 चीज चाहिए। स्थानीय स्तर पर भंडारण की व्यवस्था चाहिए, प्रोसेसिंग की व्यवस्था चाहिए और मार्केटिंग चाहिए। अब भंडारण के लिए वहां ना होने के कारण बड़ी संख्या में 20% अनाज सड़ के चला जाता है, शहरों में जाता है, औने पौने दाम में बेचने को किसान मजबूर होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया, और माननीय अमित शाह जी जो देश के सहकारिता और गृह मंत्री हैं, ये संशोधन विधेयक लेकर आए। एक ऐतिहासिक कदम जिन्होंने उठाया है। मान्यवर, कुछ राज्यों में तो सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात और महाराष्ट्र। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सहकारिता को एक पार्टी ने ऐसा पलीता लगाने का काम किया, उसे अपनी जीजी जागीर समझ लिया, सहकारिता को समाप्त करने का काम किया। और मुझे आश्चर्य है, आज वो यहां से चले गए। उनको सुनना चाहिए था। एक ही परिवार सहकारिता के हर उसमें आएगा। यदि संचालक मंडल उनकी इच्छाओं के विरुद्ध बन गया तो उसे भंग करके प्रबंध संचालक बैठा देंगे अपना, वो फिर वहां शोषण करेगा, लूट खसोट करेगा, और इस तरह डिफेंड कर दी गई पूरी सहकारी समितियां। इस तरह से उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम एक पार्टी और एक परिवार ने किया था। मुझको इस बात का कहते हुए बहुत अफसोस भी है। आज वहां सुधार हो रहा है, लेकिन जिस तरह का गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारिता को हमने देखा है, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अमूल है, इफ्को है, क्लबको है, अमूल में 36 लाख महिलाएं हर रोज दूध लेकर 58,000 करोड़ का व्यापार करती है। और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बताया, उसी उपक्रम में किसी ने भी 100 रुपए से ज्यादा की पूंजी नहीं लगा रखी। ये है उदाहरण, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस तरह से वहां किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। खेत में अच्छी पैदावार नहीं होती, लेकिन दूध के द्वारा ही उनमें संपन्नता आने का काम हुआ है। क्रबको और इफ्को जैसे उपकरण हैं। कई राज्यों में सहकारिता को परिवारवाद ने जो नुकसान पहुंचाया, उसमें मेरा राज्य भी है। मानवर 75 वर्षों में न तो सहकारिता आंदोलन पर ध्यान दिया गया, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बदलने पर नाम विचार किया गया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नया सहकारिता मंत्रालय बना है। यह सहकारिता मंत्रालय देश के विकास में अपना योगदान देगा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, 2 सालों में सहकारिता आंदोलन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने किया है। सबसे पहले PACS पैक्स में किया, पैक्स को पुनर्जीवित किया, पैक्स में पारदर्शिता लाने का काम किया, इसे बहुआयामी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। आज 25 व्यवसाय इससे जुड़ सकते हैं। यह मंत्रालय बनने के बाद पहली ही बैठक में 63,000 पैक्स को 2500 करोड़ देकर संपूर्ण भारत को कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया। कंप्यूटराइजेशन से जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड के साथ इसका सीधा जुड़ाव हो जाएगा। ऑडिट की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सिस्टम इंटीग्रेटेड फाइनल होने पर पैक्स कई प्रकार के व्यवसाय से जुड़ेगा। सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाकर सब राज्यों को भेजा, एडवाइजरी भेजी। आश्चर्य है, सभी राज्यों ने स्वीकार किया, बंगाल और केरल के अलावा। आज दोनों गायब हैं यहां से। बंगाल और केरल के अलावा सब राज्यों ने उसे स्वीकार किया, केवल ये बंगाल और केरल ने स्वीकार नहीं किया। पैक्स सब, चाहे वो डेयरी का दूध का काम हो, चाहे मछुआरा समिति बनाकर उसका काम हो, जैसे मैंने बताया 25 व्यवसाय से उद्योगों से ये जुड़ा है। और FPO का काम भी 1100 पैक्स FPO के नाम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मान्यवर, नए बायलॉज के हिसाब से पैक्स LPG वितरण का काम, जन औषधि चलाने का काम, गरीबों को मुफ्त अनाज रिटेल आउटलेट पर पैक्स काम करेगा। पैक्स के सदस्यों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दिया जाएगा। माननीय सभापति जी, उपसभापति जी,
पैक्स भंडारण का काम करेगा। जैसे मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण नहीं है, तो वहां यदि वेयर हाउस बनेगा तो FCI किराए पर लेगा। ग्रामीण स्तर पर भंडारण की व्यवस्था होगी। एक तरफ ले जाते हैं शहरों में भंडारण करने के लिए, फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है सस्ते गले की दुकानों में, फिर वो गांवों के लिए भेजा जाता है वापस वहीं। तो निचले स्तर पर इसमें ग्रामीण स्तर पर भंडारण की व्यवस्था होगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को वन टाइम सेटलमेंट का अधिकार देकर राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह कर दिया है। इसके साथ साथ 10% नई ब्रांच खोलने में अब रिजर्व बैंक की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होगी। माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के किसान अपने गन्ने कोऑपरेटिव मिलों में बेचते हैं, लेकिन इस पर लाभ 30% टैक्स GST कटता था। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों को दिए जाने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स को उसको खत्म करने का काम किया है और 10 से 15 हजार करोड़ रुपया जो किसानों को गया था उसको वापस करने का काम किया, वो किसानों को दिया जाएगा। ये भी निर्णयकारी का काम किया इसके द्वारा। सहकारिता को मजबूत करने के लिए 3 बहुराज्य सोसाइटी बनाई गई। पहला, किसान अपना सामान निर्यात कर पाए। डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए किसान सब्जी बोलेगा, किसान अपनी जो परंपरागत खेती है उससे हटके कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग नहीं है, कहां जाए, ये उसे उपलब्ध कराने का काम करेगा ताकि वो एक्सपोर्ट भी की जा सके। दूसरी, सहकारी समिति बीजों के उत्पादन में छोटे किसानों को जोड़ेगा। बहुराज्य सहकारी समिति 1 एकड़ या आधे एकड़ के किसानों को भी बीज उत्पादन में जोड़ेगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ यह समिति सारी औपचारिकताएं पूरी करेगी। छोटा किसान सोचता था मैं कुछ कर दूंगा तो मेरा सड़क चला जाएगा, टमाटर मेरा तो बिकेगा नहीं, तो इस तरह की उनकी दिक्कतें समाप्त करने का काम करेगी। तीसरी समिति जो देश के ऑर्गेनिक उत्पादों की देश और दुनिया में मार्केटिंग कर किसानों को उचित भाव दिलाने का काम करेगी। किसान तो चाहता है कि ऑर्गेनिक उत्पाद करें, लेकिन वो करता है, उसके सर्टिफाइड होने के बाद भी उसको मार्केट नहीं मिलता, उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराने का काम करेगी। और सरकार ने सहकारी सोसाइटी चीनी मिलों को NCDC के माध्यम से 10,000 करोड़ का लोन एथनॉल संयंत्र लगाने का फैसला किया है। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां गन्ना बहुत होता है और मान्यवर गन्ने के क्षेत्र में स्थिति ये थी, माननीय मोदी जी की सरकार आने से पहले 2200 रुपए क्विंटल चीनी थी और चाबी फेंक दी मिल मालिकों ने, हम नहीं चला सकती। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि एथनॉल, गन्ने के रस से डायरेक्ट एथनॉल बने, 3100 रुपए क्विंटल से नीचे घरेलू बाजार में चीनी ना बिके और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 60 लाख मीट्रिक टन चीनी को एक्सपोर्ट किया, इंसेंटिव देने का काम किया और अपना बफर स्टॉक बनाने का काम किया। तो एथनॉल जो कभी 38 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष बनता था, आज वो 2000 करोड़ लीटर पर पहुंच गया है और 12% इस समय पेट्रोल में एथनॉल मिलने लगा है और लक्ष्य है कि इसको और बढ़ाया जाए। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा फायदा यह होगा, सरकार को जो क्रूड ऑयल में पैसा जाता है, मुद्रा जाती है, वो नहीं जाएगी, बचेगी। और तीसरा, पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। तीनों बात होंगी। तो इस तरह से एथनॉल संयंत्र लगाने का किसानों के जीवन में नई रोशनी लाने का काम किया गया। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नई सहकारिता परीक्षण का एक विश्वविद्यालय बनाने का जो निर्णय किया गया, उसका भी 1 मिनट और लूंगा सर, एक विश्वविद्यालय बनाने का काम किया गया है ताकि लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। सहकारिता डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जैसा मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा 90% तैयार कर लिया गया है। अटल जी की सरकार में जो 57वां संशोधन विधेयक बिल पास किया गया था, उसे किसी प्रकार सरकार ने लागू नहीं किया, अब इस बिल के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। माननीय सभापति, अक्सर शिकायत होता है सहकारिता के क्षेत्र में राजनीतिक दखल, इसको समाप्त करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी और यदि संचालक मंडल या बोर्ड के 1/3 जगह रिक्त होंगी तो दोबारा चुनाव कराया जाएगा, यह भी प्रावधान किया गया है। मान्यवर, इस संशोधन के बाद बोर्ड SC, ST और महिला का आरक्षण करने का काम किया है। बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए कंकरेंट ऑडिट की व्यवस्था की गई है। 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली ऐसी समितियों के ऑडिट करना होगा और रिजर्व बैंक का जो पैनल होगा, ऑडिटर उससे आएगा। धन्यवाद। ताकि उसमें कोई घपलेबाजी ना हो, किसी रिलेशन को, ब्लड रिलेशन या डिस्टेंट रिलेशन वाले को भी
नहीं रख सकते धन्यवाद। कर्मचारी, वरना अपने घर परिवार धन्यवाद। की बात लेते थे। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कहने को तो बहुत है, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा Thank you. और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। ऑनरेबल वी विजय साई रेड्डी जी, प्लीज। Thank you, Deputy Chairman, sir. I, on behalf of my party, YSRCP, and our Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu, raised to support this bill, sir. Sir, there are 3 points which I would like to bring to your kind notice. The first one is the bill proposes to establish rehabilitation, reconstruction, and development fund. How the money is coming to this fund? Not by way of budgetary grant or anything. It is only the profit-making multi-state cooperative societies contributing to the fund, which will be spent for reviving the sick cooperative societies. Sir, in this regard, I suggest to the Honorable Minister to ensure that the fund that is spent out of this rehabilitation, reconstruction, and development fund should be properly utilized, and there has to be a mechanism, and by constituting a board which will really assess the sick cooperative societies which require the funds. Sir, at present, I can tell you what is happening in the cooperative societies. As a chartered accountant, I can tell you, sir. Sir, most of the cooperative societies which are becoming sick is only on account of political interventions. Sir, the elected body of the cooperative societies, that is either chairman, president, or the board of directors, according to this bill, is maximum 21. Leave about this, sir, state cooperative societies also. These chairmen, presidents, and then the board of directors take the kickbacks ranging from 5% to 50% of the loan that is extended to its members. And you can definitely visualize a situation where the recipient or the loan taker gives 50% as a kickback. It is quite obvious that he will not refund it. So therefore, most of the cooperative societies which are becoming sick is only on account of rampant corruption that is taking place in the cooperative societies, sir. Same thing should not happen even in the case of multi-state cooperative societies also. I request the honorable member to take care of this issue and identify those sick cooperative societies which really require the funds, which can really be revived. Not all the sick cooperative societies, sir. And sir, the next point is cooperative election authority. Sir, I request the honorable minister once again to ensure that these elections should be, sir, one very important, for many cooperative societies in India at present, they hold the elections like assembly elections and parliamentary elections and then spend crores of rupees. That is the scenario now. Why? Those cooperative societies which have got the substantially, significantly large fund, the elected bodies or the aspirants spend lakhs of rupees and then get themselves elected, sir, and resort to corruption eventually to recover the money what they spend in the election. This cooperative election authority should ensure that these unwarranted political elements should not come in the way to spoil the cooperative society spirit, sir. Sir, the government of India, sir, the cabinet announced, last point, sir. The cabinet has announced that it will set up 3 new apex national multi-state cooperative societies. National Multi-State Cooperative Seed Society, National Multi-State Cooperative Organic Society, National Multi-State Cooperative Export Society. Sir, the proposed national multi-cooperative societies can take the cooperative movement in the agricultural sector to a logical conclusion and unlock the potential, sir. Therefore, however, it is unclear from this proposal that how they will bring the benefit of efficiencies in the overall functioning of the agricultural cooperative societies. I request the minister to provide further clarity in this respect, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Honorable Vijay Sai Reddy ji.
Honorable G.K. Vasan. Honorable G.K. Vasan. Sir, the cooperatives are known as the heart of the village and rural, sir. Cooperative means self-development, sir, which consists of the people who want to develop their area, their village, their panchayat, sir. This is a very important bill which will fulfill the needs of crores of people in our country, sir. I'm sure, sir, after a decade, this bill is a well-drafted bill. The cooperatives were consulted. I think 28 ministries were consulted, and then the bill has been incorporated, sir. Agriculture is the need of the hour for the country, sir. Agriculturist has to be encouraged. Collective bargaining for agricultural farmers are there in this bill, sir. I am sure, sir, this bill has given a strict provision for transparency. Irregularities has to be checked, sir. I am sure financial irregularities will be corrected through the guidelines in this bill, sir. One important point which I would like to stress on this bill is, sir, election conducted through cooperative should have strict guidelines, sir. Clause 6 says the expenses for holding elections by the authority shall be borne by multi-state cooperative society in such a manner as may be prescribed. But unfortunately, sir, as my earlier member stated here, elections are not done in many states by order or by guideline, which has to be strictly watched so that an ordinary person who is interested in the formation of a good village and development of a good village should come as a chairman and member. I am sure, sir, this bill will definitely find a way for that. With these words, sir, I support this bill. Thank you, Honorable G.K. Vasan ji. माननीय कैलाश सोनी जी. माननीय कैलाश. धन्यवाद माननीय उपसभापति जी. मैं आज इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं. 5 मिनट है आपका सोनी जी. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 मान्यवर 30-35 साल से मैं कोऑपरेटिव से जुड़ा हूं. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और जिले के सहकारी बैंक में भी. आज इतना महत्वपूर्ण बिल जो हिंदुस्तान की 60% आबादी को प्रभावित करता है. इंडियन ग्रामीण इकोनॉमी की रीढ़ यदि कोई चीज है तो यह सहकारिता है. एक के लिए सब और सब के लिए एक. बिना सहकार नहीं उद्धार. और इसके लिए हम सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने कोऑपरेटिव को और उसकी उपयोगिता को समझ करके अलग विभाग खोला. न केवल विभाग खोला, हिंदुस्तान के सबसे टेक्निकल आदमी को. और मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूं, सारी कोऑपरेटिव प्रांत की सोसाइटियों को मैंने देखा है. गुजरात यथार्थ में आज अव्वल है. महाराष्ट्र से भी ऊपर आज कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में, सहकारिता के मामले में गुजरात का स्थान श्रेष्ठ स्थान. और वहां से आने वाले सबसे भिज्ञ कोऑपरेटिव के सेक्टर में ऐसे माननीय अमित भाई शाह को यह विभाग दिया. इसके पहले भी कोऑपरेटिव पूरे देश में इतना महत्वपूर्ण विषय पूरे देश में दम तोड़ रहा है. अटल जी के समय भी इसकी चिंता हुई. प्रोफेसर बैजनाथन के अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया. और आज हम साधुवाद देना चाहते हैं माननीय अमित शाह जी को कि माननीय
बैजनाथन आयोग की जो भी सिफारिशें थी, उन सारी सिफारिशों को इस संशोधन बिल में समाहित किया गया है। जितने भी आजादी के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर में जो खंदकें थी, जो खाइयां थी, जो कोऑपरेटिव को निगल रही थी, ऐसे सारे कानूनों को संशोधित करके नए रूप में और पूरे हिंदुस्तान के स्तर पे ये बहुराज्य सहकारी विधेयक है, संपूर्ण राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप। और आप सब ने भी अनुभव किया, पूरे देश ने अनुभव किया है कि ये कोविड के समय में जब सारा हिंदुस्तान थम गया तो ये हमारा गांव चलता रहा, ग्रामीण इकोनॉमी चलती रही। उसको सशक्त बनाने से ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का रास्ता साफ होगा और इसके लिए एक डेमोक्रेटिक सारे तरह के जो अवरोध हैं उनको समाप्त करके और ये नए स्वरूप में जो कोऑपरेटिव की आत्मा के रूप में काम करेगा, ऐसा संशोधन बिल अभी ये प्रस्तुत किया है। इसमें सभी तरह का विचार, पारदर्शिता, वहां पे टोटल उसका जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसकी जो कोर पूर्ति है, उसका जो पंजीकरण है, उसका जो ऑडिट है, और उसमें समय समय पर जिस तरह के अधिकार टोटल मेंबरों को दिए हैं कि पहले कोई जमाने में किस तरह से कोऑपरेटिव की दुर्दशा की है हिंदुस्तान भर में कि कैसे कैसे चुनाव कोऑपरेटिव में कराए हैं और पुश्तैनी हो गए, जो एक बार बन गया फिर वो हटता नहीं है। इस सब को देख करके उनमें संशोधन करके गणपूर्ति और इन सारे दोषों को दूर करने के लिए ये विधेयक प्रस्तुत किया है और इससे सारे हिंदुस्तान के ग्रामीण इकोनॉमी की तरक्की का रास्ता साफ होगा। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पे जिससे सारे हिंदुस्तान का भाग्य जुड़ा है, 60% आबादी का भाग्य जुड़ा है, इस विषय को छोड़ करके, और ये कैसा अपोजिशन है। आज सारा देश इसकी चर्चा करेगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे, और इसने प्रमाणित कर दिया है कि ये हमारा विरोध इनका जन सरोकारों से कुछ लेना देना नहीं है। इनका केवल अपनी राजनीतिक अभिप्साएं पूरी करने के अलावा जनता के हितों से इनका कोई संबंध नहीं है। और ये भूल गए हैं कि अब ये 75 साल की आजादी के हो चुके हैं। जनता नेताओं से, इन नेताओं से बहुत ज्यादा समझती है और इसलिए विषय पर बहुत अच्छा आज ये इतिहास लिखा जाएगा कि कोऑपरेटिव बिल पे ऐसे लोगों ने बहिष्कार किया है। आज मैं इस बिल के लिए माननीय सहकारिता मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीएल वर्मा साहब का, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपना कथन समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय सोनी जी। माननीय धनंजय मल्लिक जी। सर धनंजय महाडिक। धनंजय, धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट 2022 पे बोलने का मौका दिया। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि वो ये बिल लेके आए, क्योंकि सर ये छोटे किसानों से जुड़ा हुआ बिल है, छोटे व्यवसायिकों से जुड़ा हुआ बिल है और खासकर कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये बिल है। सर मैं कोऑपरेटिव सेक्टर से आता हूँ, मेरी तीसरी पीढ़ी भी कोऑपरेटिव में है। मेरे फादर कोऑपरेटिव चलाते थे, मैं कोऑपरेटिव में हूँ, अभी मेरा बेटा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन बन गया। तो हम इससे जुड़े हैं और ये संशोधन इतने सालों बाद आ रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर देश में करीब 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है सर, उसमें से 1600 मल्टी स्टेट है और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 570 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है सर। जब से नया सहकारिता मंत्रालय देश में स्थापन हुआ, अमित भाई शाह जी ने इसका चार्ज लिया, उन्हें मंत्री बनाया गया, बहुत बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए सर। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो उन्होंने लिया वो गन्ना किसानों के हित में है।
करीब 30-40 सालों से शुगर फैक्ट्रियों का एक बहुत बड़ा प्रश्न जो इनकम टैक्स से रिलेटेड था वो प्रलंबित था। शुगर फैक्ट्री जो एफआरपी के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो किसानों को बांटता था और उस पे इनकम टैक्स लगाया जाता था सर। करीबन 30-40 साल से ये हो रहा था और एक एक शुगर फैक्ट्री पे इनकम टैक्स का करीबन 100 करोड़ 200 करोड़ का बकाया चल रहा था, नोटिस आ रही थी, कई सारे फैक्ट्रियों के खाते सील करने का भी प्रोविजन हुआ था, काम हुआ था। लेकिन जब अमित भाई शाह जी ने चार्ज लिया, एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया, 10,000 करोड़ सभी शुगर फैक्ट्रियों पे लगाया हुआ इनकम टैक्स माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। 12 करोड़ किसान जो गन्ना उत्पादक है उन्हें इससे राहत मिली है। मैं इसके लिए अमित भाई शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं सर। एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिसे पैक्स को समृद्ध करने का। पैक्स मतलब जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज गांव स्तर पे होती है, जो सिर्फ लेन देन का काम करती थी, अभी करीब 25-26 अलग अलग एक्टिविटीज उन्हें देने का, उनको परमिशन देने का एक निर्णय लिया है। उसे सिर्फ परमिशन नहीं, उसको फंडिंग करके समृद्ध बनाने का भी काम किया है। उसके लिए भी मैं अमित भाई शाह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर देश में सहकारिता में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, असमर्थता, अविश्वास और पारदर्शिता का अभाव, ये सभी का समाधान करने के लिए ये बिल लाया गया है सर। ये 2-4 बिंदुओं पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा सर। सबसे पहले तो किसी कोऑपरेटिव में अगर कोई डायरेक्टर या कोई चेयरमैन कोई डिफॉल्ट करता है या कोई घोटाला करता है, तो इस बिल में प्रोविजन है कि वो 6 साल तक आगे कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके साथ साथ सर, अगर वो इंसान घोटाला करता है या वो डायरेक्टर बॉडी कोई गड़बड़ करती है, तो और किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो चुनाव नहीं लड़ सकते। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस बिल का है सर। इसमें और एक प्रोविजन है सर, हमने देखा है कोऑपरेटिव में जो भ्रष्टाचार या घोटाले होते हैं, उसकी एक और वजह है जो मेन चेयर पर बैठे उनके रिलेटिव्स उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड पे आते हैं, उसमें बड़ी पोजीशन पे आते हैं। तो इसमें एक प्रोविजन है कि अपने नजदीकी रिलेटिव को जॉब पे वो नहीं रख सकते। मैं मंत्री से कहना चाहूंगा सर, उसमें थोड़ा सा बदलाव संशोधन करने की जरूरत है। उसमें रिलेटिव्स लिखा गया है सर। आप देखते हैं, आप समझ सकते हैं, हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में 16वीं सदी से हमारे सारे रिश्तेदार हैं, तो उसकी व्याप्ति बढ़ जाती है। अगर उसको रिलेटिव कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि कई बड़ा समाधान इसका हो सकता है सर। मैनेजमेंट प्रोफेशनल में भी जैसे बहुत बड़ा अच्छा संशोधन किया है। पहले मैंने जैसे बताया कि अपने नजदीकी लोगों को या रिलेटिव्स को एमडी पोस्ट हो, सीईओ पोस्ट हो दी जाती थी, लेकिन अब ऐसे किसी इंसान को जब तक वो बैंक प्रोफेशनल ना हो, आईटी प्रोफेशनल ना हो या बिजनेस प्रोफेशनल ना हो, तब तक उसको ये पोजीशन नहीं दी जा सकती। एक प्रोविजन किया है और साथ ही साथ एससी एसटी का भी प्रोविजन किया है जो पहले नहीं था। ये एक बहुत ही सराहनीय मूव है, मैं समझता हूं सर। सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कई सारी अड़चनों का सामना करते हैं और कई सारे कोऑपरेटिव सिक भी होते हैं, तो इसमें एक रिहेबिलिटेशन का एक फंड अलॉटमेंट का एक नया मुद्दा इसमें लिया गया है, जिससे जो सिक यूनिट है उसको पुनर्जीवित करने के लिए। और ये मैं समझता हूं सर, ये बहुत ही सराहनीय मसला है, क्योंकि जैसे अभी जो निर्णय हुआ सहारा में, हमने देखा सहारा का कई सालों से लाखों लोगों का पैसा अटका हुआ था, वो परेशान थे, लोग जेल में जाके बैठे थे और पैसा फंसा हुआ था। अमित भाई शाह जी ने उस पर निर्णय लिया और आज लाखों लोगों का पैसा 45 दिन में वापस करने का जो निर्णय हुआ है वो सराहनीय है। मैं इसको बहुत सराहता हूं सर। सर, ये एक क्लॉज है जिसमें सेक्शन 22 है, उसमें क्लॉज 19, उसमें लिखा गया है सर कि 1/3 जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, 21 मेंबर्स होते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो 1/3 मेंबर्स अगर रहेंगे तो वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूं उसको संशोधन करने की जरूरत है। एटलीस्ट 50% बोर्ड होना आवश्यक है सर, नहीं तो चेयरमैन, एमडी और 2 डायरेक्टर मिलके कोई डिसीजन ले लेंगे और जो मुझे लगता है वो किसानों के या मेंबर्स के हित में नहीं होगा, तो उसे अगर 50% किया जाए तो इसका समाधान हो सकता है सर। सर, ये कुल मिला के जो नारा प्रधानमंत्री जी ने और अमित भाई शाह ने दिया था, इस सहकार से समृद्धि की ओर, छोटे किसान, सामान्य जीवी पर इस
निर्णय का बहुत बड़ा अच्छा असर होने वाला है। देश की इकोनॉमी में भारत की जो भूमिका है, जो भारत हम 5 ट्रिलियन की ओर हमारी इकोनॉमी जाने का जो प्रयास हो रहा है, जो घोषणाएं हुई है, और आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है, उसमें बढ़ोतरी के लिए इससे मदद होगी। यह बिल देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है और मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद माननीय धनंजय राव महादिक जी। माननीय हरनाथ सिंह यादव नहीं, माननीय नरहरि अमीन जी प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने आज मुझे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल 2022 पर बोलने का अवसर दिया। देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने देश की आजादी के 70 साल के बाद सहकार मंत्रालय को अलग मंत्रालय बनाने का काम किया और ये मंत्रालय की जिम्मेदारी देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह को सहकार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। माननीय महोदय, अमित भाई शाह भारतीय जनता पार्टी में जब युवा विभाग में काम करते थे तब से वो सहकारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे। मैंने उनके साथ भी काम किया है और आमने सामने भी सहकारी क्षेत्र में काम किया है। अमित भाई शाह एशिया की सबसे बड़ी बैंक अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसकी आज 225 से ज्यादा ब्रांच है, उस बैंक के कई सालों वो चेयरमैन रहे। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के भी चेयरमैन रहे और कई रूरल एरिया की सहकारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए अमित भाई शाह को ये जिम्मेदारी नरेंद्र भाई मोदी ने दी है। हम सब आशा व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में सहकारी प्रवृत्ति में जितनी भी कमी है, एक कमी दूर करने का काम सहकार मंत्रालय अमित भाई के माध्यम से करेंगे। साहब, गुजरात और महाराष्ट्र दो एक राज्य ऐसे हैं जिसकी सहकारी प्रवृत्तियों का अभ्यास करने के लिए पूरे देश के कई राज्यों के लोग आते हैं। विश्व के अनेक देशों के लोग गुजरात और महाराष्ट्र की सहकारी प्रवृत्तियों का अभ्यास करने के लिए आते हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासी विस्तार है, जंगल विस्तार है, पहाड़ी विस्तार है, जहां विधवा तख्ता बहन जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन भी नहीं है, ऐसी विधवा बहनें 2 गाय 2 भैंस रखकर डेयरी में दूध भर के उसका परिवार का जीवन निर्वाह चलाने का काम ये डेयरी के माध्यम से करते हैं। और गुजरात में छोटे छोटे गांव में अनेक सहकारी संस्था आज कार्यरत है जिसके सभासदों को पूरा आर्थिक लाभ उसके माध्यम से मिलता है। देश में आज 2 लाख से अधिक डेयरी की कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, 350 से अधिक शुगर सहकारी मंडियां हैं, 1 लाख से अधिक प्राइमरी एग्रीकल्चर और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 400 से अधिक जिला सहकारी बैंक है, 35 से अधिक राज्य सहकारी बैंक है और 2000 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक है, जिसके माध्यम से उसके सभासदों को लाभ देने का काम ये सहकारी संस्था के माध्यम से होता है। महोदय, ये सहकारी व्यवस्था को और मजबूत एवं पारदर्शक बनाने के दिशा में सरकार द्वारा विधेयक सदन में लाया गया है। इस विधेयक को मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की जिम्मेदारी तय करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए है। सहकारी संस्था में समयसर चुनाव होना जरूरी है, ये भी उस विधेयक में प्रावधान किया गया है। विधेयक में उन समितियों को लिए प्रावधान किया है जिनका काम एक से अनेक राज्यों में है। ऐसे देश में 1500 से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनका काम एक से अधिक राज्यों में है। वर्तमान समय में किए जा रहे प्रावधानों को इन सहकारी समितियों के सीधा लाभ प्राप्त हो सके, ये सभी बात ये विधेयक में रखी गई है और आने वाले समय में सहकारी संस्थाओं को मजबूती मिले और सरकार की दखलगिरी नहीं हो, ऐसी बात ये विधेयक में रखी गई है।
और आज कमनसीबी है कि कई जहां भाजपा की सरकार नहीं है और बिन भाजपा की सरकार है, वहां पर सहकारी संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रवृत्ति चल रही है, वहां चुनाव भी समय से नहीं हो रहा है। तो ये विधेयक लाने में मंत्री श्री ने बहुत पूरा ध्यान रखा है। तो आने वाले समय में ये सहकारी बिल के माध्यम से सहकारी संस्था और मजबूत होगी और उससे पूरे देश के सहकारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए सभासदों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद माननीय नरहरि अमीन जी। माननीय श्री मिथिलेश कुमार जी, माननीय मिथिलेश कुमार जी। माननीय उपसभापति महोदय, आज मुझे इस बिल के समर्थन में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। राज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के बिल पर को लाकर के सहकारिता मंत्री जी ने हमारे देश के किसानों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है। ये विधेयक दशकों पुराने बहुराज्य सहकारी समिति 2002 के संशोधन में करने जा रहा है, जो कई राज्यों में संचालित सहकारी समितियों की निगरानी करता है। कानून उन राष्ट्रीय सहकारी समितियों को सूचीबद्ध करता है जो इसके दायरे में आएंगे। भारतीय सहकारी आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुई है। अकेले भारत में 29 करोड़ समथिंग व्यक्तियों की संस्था वाली 8,54,355 सहकारी समितियां हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि कुछ राज्यों में लगभग 5 करोड़ सदस्यों द्वारा संचालित 2,30,000 सहकारी समितियां हैं। मान्यवर, बोर्ड की संस्था को बढ़ाने के लिए 2002 अधिनियम की धारा 41 में संशोधन किया जा रहा है, जबकि कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाने के लिए 45 में संशोधन किया जा रहा है। अस्थायी बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के गठन में धारा 63A का समावेश उल्लेखनीय है। महोदय, इस विधेयक में प्रस्तावित उपाय वास्तव में भारतीय बहुराज्य सहकारी समितियों के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण कार्यात्मक मुद्दों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सहकारी समितियों के अंदर वित्तीय चोरी, चुनाव में देरी और विवाद, लेखा परीक्षकों का पक्षपातपूर्ण चयन, भर्ती में पक्षपात और खराब सदस्य भागीदारी सहित विभिन्न प्रकार के मुद्दों को संशोधित करना है। महोदय, विधेयक का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी में सुधार करना, शासन में पारदर्शिता बढ़ाना और भारत में बहुराज्य सहकारी समितियों के भीतर संस्था विविधता को प्रोत्साहित करना है। यह न केवल बहुराज्य सहकारी समितियों की संरचना को सरल बनाता है, बल्कि कहीं अधिक प्रभावी नियामक ढांचे की भी अनुमति देता है। उदाहरण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार, जो मूल अधिनियम के तहत बहुराज्य सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं, को कई प्रशासनिक और भौतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो शिकायतों को हल करने की उसकी क्षमता को सीमित करते हैं। 2023 विधेयक का उद्देश्य रजिस्ट्रार की कार्यप्रणाली में सुधार करना है और इस तरह ई फाइलिंग और डिजिटल सहायता जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का बेहतर उपाय करके व्यापार करना आसान बनाना है। महोदय, ये विधेयक 115 साल पुराने सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार का कदम है। ये बहुराज्य सहकारी समितियों में आमूलचूल सांस्कृतिक बदलाव लाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी प्रगति होगी। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता विभाग बनाकर के भारत में नई क्रांति लाने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस सहकारिता विभाग को बनाकर के उन्होंने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने की जिम्मेदारी इस विभाग को दी है। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किसानों की दोगुनी आय बढ़ाने का काम करने के लिए इस विधेयक में तमाम संशोधन किए हैं। महोदय, बताना चाहता हूं
कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले अन्य दलों की सरकारें रहीं, जिनमें सहकारी विभागों में अपने परिवारों का नौकरी देना, अपने परिवारों को ठेका देना, इस तरीके से विभाग में बहुत ही लंबा भ्रष्टाचार किया गया तथा सहकारी चीनी मिलों को बंद करके बेचने तक की व्यवस्था कर दी गई थी। मैं उस समय विधायक था, तो मैंने उन चीनी मिलों चलाने के लिए संघर्ष किया। तब मेरे जनपद में ही हमारे चीनी मिल पुआया, वो चीनी मिल बंद हो गई थी, उसको चालू करके आज उस चीनी मिल में किसानों का 100% गन्ना खरीदा जाता है और उनका समय से भुगतान होता है। मित्रों, मुझे कहने में बहुत हर्ष हो रहा है कि सहकारिता बिल को पेश करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश से ही माननीय BL वर्मा जी है। उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को पेश करके सदन में लाने का काम किया है। वर्तमान समय में देश भर में 1500 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियां, लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों और लगभग 29 करोड़ इसके सदस्य हैं। ये समितियां स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों के आधार पर अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देती हैं। ये समितियां पूरे देश में फैली हुई हैं और कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उससे सहकारिता क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महोदय, ये बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को बहुराज्य सहकारी अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए लाया गया। इस विधेयक में कई नए प्रावधान जोड़े गए जो देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह संशोधन व्यवसाय करने में आसानी, अधिक पारदर्शिता और शासन को बढ़ाने का काम करेगा। ये संसाधन चुनावी प्रक्रिया में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्राधिकरण का गठन किया गया है। मान्यवर, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा महत्वपूर्ण बिल जिसमें आरक्षण व्यवस्था दी गई है, सहकारिता मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद माननीय मिथिलेश जी, आपका समय हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, आप अंतिम वक्ता हैं। सभापति जी, अंतिम वक्ता हैं इस विषय पर। नहीं, मैं विषय पे बोलना नहीं चाहता। बोलिए। और माननीय अमित भाई शाह जी को और वर्मा जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं ग्रामीण क्षेत्र की ओर से। मैं एक बात साझा करने के लिए इस ऑगस्ट हाउस में आपका समय लिया है, 1 मिनट ही लूंगा। हमारे गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में ईडर नाम का एक गांव है, तालुका प्लेस है। वहाँ 8 साल से नीचे की उम्र के बच्चों की एक कोऑपरेटिव चल रही है, जिसमें 8 साल के नीचे के बच्चे और 18 साल होते ही वो अपने आप इसके सदस्य मिट जाते हैं। उस कोऑपरेटिव का नाम है बाल गोपाल बैंक। अभी आपको कल्पना, मैं देख के आया हूँ, वो इस एल्डर हाउस में इस बच्चों की बात इसीलिए मुझे गर्वपूर्वक कहनी है सर, कि उनके पास तो आय का स्रोत होता ही नहीं है, तो वो पैसे कहाँ से निकालते? तो वहां बैंक के कर्मचारी उसके घर में वो गल्ला बचत बैंक का छोड़ आते हैं। उसके मामा, उसकी मासी, उसके फूफा जो आते हैं और वो जो इनको गिफ्ट देते हैं वो बचत बैंक में डाल देते हैं, और हर महीने बैंक के कर्मचारी उनके माँ बाप की उपस्थिति में वो गल्ला खोलते हैं और उसमें से जो राशि मिलती है उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोऑपरेटिव का कितना बड़ा महत्व होगा सर। उसमें से एक बच्चे ने मंच पे आकर कहा कि मैं मेडिकल में जाना चाहता हूं, मगर मैं जब मेडिकल में जाऊंगा तो मेरी फीस के पैसे ये बाल गोपाल बैंक से मुझे मिलने वाले हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आज इस सदन में मुझे बताना है, बाल गोपाल बैंक ईडर का टोटल बचत संख्या आज इनके पास 16 करोड़ रुपए की बचत है। इतनी एक बड़ी अच्छी बात मुझे कोऑपरेटिव के माहौल को यहाँ वर्मा जी ने इस विधेयक लाकर कहा, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। आपने अनुमति दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रूपाला जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचना देश के साथ शेयर की। अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय उपसभापति महोदय,
आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 पर हमारे माननीय जन सदस्यों ने चर्चा की है, सार्थक चर्चा की है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। महत्वपूर्ण चर्चा में भाग भी दिया है, अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं और बिल का समर्थन भी किया है। माननीय सदस्यों में माननीय निरंजन बिशी जी, माननीय एस निरंजन रेड्डी जी, माननीय अनिल सुखदेव राव गोंडे जी, माननीय एम थम्बी दुरई जी, माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय बी विजय साई रेड्डी जी, माननीय जी के वासन जी, माननीय कमलेश सोनी जी, माननीय धनंजय माणिक जी, माननीय नरहरि अमीन जी और माननीय मिथिलेश कुमार जी, और साथ ही साथ आदरणीय माननीय मंत्री जी ने भी हम सबको एक दृष्टांत, माननीय मंत्री जी ने, रूपाला जी ने सहकारिता का बहुत ही सफल दृष्टांत देकर के बच्चों के संबंध में बताया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं इसी के साथ इस बिल के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि सहकारिता का इतिहास हमारे देश में लगभग 15 वर्ष पुराना है और इन 115 वर्षों में सहकारिता ने नए नए आयाम भी प्रस्तुत किए हैं और हम ये भी जानते हैं कि सहकारिता प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति का प्राण रहा है और भारत ने सहकारिता का विचार विश्व को दिया है। और अपने भारत के स्वतंत्रता के 75वें सालगिरह जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें हाल ही में सहकारिता ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो 100वां मनाने का काम किया है और साथ ही साथ दुनिया की महामारी और उसके बाद आर्थिक मंदी से जिस तरह से दुनिया उभर रही है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय ने इन 2 वर्षों में नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और खास तौर से माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में जैसे जो काम किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ऐसे वक्त में 140 करोड़ के देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये तय किया कि सहकारिता की ऊर्जा के साथ साथ नए भारत की रचना हम सहकारिता के माध्यम से करेंगे और हमारे सहकार के महर्षियों का योगदान आज हम नहीं भूल सकते और सहकारिता के योगदान में जिन्होंने इस इमारत को खड़ा किया है उन महर्षियों को मैं याद करना चाहता हूं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे बैकुंठ भाई मेहता जी, तिरुभाई दास पटेल जी, बिट्टाराव विखे पाटिल जी, यशवंतराव चौहान जी, लक्ष्मण राव ईमानदार जी, वकील साहब और माधवराव बुले, धनंजय राव गाडगी और वर्गीस कुरियन जैसे महर्षियों को आज मैं इस सदन में नमन करता हूं और उनके योगदान को भी मैं नमन करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, हम सहकारिता का शब्द सह और कार्य अर्थात मिलजुल करके हम जो काम करते हैं उसी को सहकारिता कहते हैं और यह सहकारिता जनता के द्वारा और जन कल्याण के लिए और जन भागीदारी से बनाया हुआ शब्द ये सहकारिता का होता है और सहकारिता जनतंत्र में बहुत समानता है। दोनों जनता की नींव पर खड़े हैं और दोनों जन सहभागिता से बने। सहकारिता लोकतांत्रिक मूल्यों से चलती है और इसमें खास तौर से मैं कहूंगा कि सहकारिता एक ऐसा मॉडल का एक ऐसा विकल्प है जिसमें प्रोडक्शन बाय मॉसेस, प्रोडक्शन बाय पीपल्स की बात करती है। सहकारिता के मॉडल मानव केंद्रित है। माननीय उपसभापति जी, आज दुनिया में सहकारिता के क्षेत्र में लगभग 30 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 30 लाख में से 1/4 से भी ज्यादा, चौथाई से भी ज्यादा, लगभग 8,55,000 सोसाइटी हमारी देश में है, जिसके लगभग 30 करोड़ मेंबर्स हैं और 95,000 पैक्स के माध्यम से हम गांव में काम करते हैं और आज 2 लाख प्राथमिक दुग्ध, 25,000 प्राथमिक मत्स्य समितियां, 1518 बहुराज्य समितियां भी इसमें शामिल हैं। तब मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सहकार से समृद्धि का जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री का है उसको लेकर के जिस तरह से हम काम करते हैं और सहकारिता के पंचहित का मंत्र जिसमें किसान हिताय, किसानों के हित के लिए लगभग हिस्सा 70 से 80% किसानों के पास वापस पहुंच जाता है। दूसरा है हमारा उपभोक्ता हिताय,
निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को योग्य दाम पर उत्पादन की प्राप्ति भी हम कराने का काम करते हैं। तीसरा आर्थिक हिताय, चौथा पशु हिताय और फिर पांचवा मानवता हिताय। इन सब कामों को काम करते करते हम कह सकते हैं कि 60 से 65% जनसंख्या जो गांव में बसती है और गांव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित रहती है। मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के तत्व को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने का निर्णय लिया है और पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों से ज्यादा रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए, जिसमें राशन, आवास, जल, बिजली, गैस से निजात देने का काम भी हमने किया है। एक तरफ हम 60 करोड़ भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ डिजिटल शक्ति से लैस हमारा युवा विश्व की चुनौतियों को स्वीकारने के लिए तैयार है। कॉर्पोरेशन मंत्रालय का ये प्लेटफॉर्म इन ग्रामीण व्यवस्था के डाइवर्सिफिकेशन में तथा हमारे ग्रामीण नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे इन 2 वर्षों में लगभग 48 पहल हमारे मंत्रालय ने की है। 48 पहल का मतलब ये कि लो 15 दिन में एक पहल हुई है और पहल केवल नहीं हुई है, हमने इम्प्लीमेंटेशन भी हमने करने का काम किया है। हम कहना चाहेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो पैक्स सहकारिता की आत्मा होती है, उस पैक्स के लिए सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2516 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके पैक्स का कंप्राइजेशन करने का काम किया है और पैक्स के कंप्राइजेशन में कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा है, हमने पैक्स को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा है, हमने पैक्स को सीधा नाबार्ड से जोड़ा है। हम कॉमन सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जिससे हमारी पारदर्शिता भी बढ़ेगी और पैक्स की दक्षता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ हमने मॉडल वायलोज लागू करने का काम भी पैक्स में किया है। जैसा कि हमारे पूर्व एक हमारे साथी ने कहा कि बंगाल और केरल को छोड़कर मॉडल वायलोज को सभी ने एक्सेप्ट किया है और उस पर हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। उस पैक्स को कैसे हम जीवंत बनाएं, कैसे बहुउद्देशीय बनाएं। आज पैक्स में 25 प्रकार की सेवाएं हम दे सकते हैं और 25 प्रकार की सेवाओं से हम उसे बहुउद्देशीय बना करके उस पैक्स को मजबूत कर सकते हैं। उनमें से मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने पैक्स में मॉडल वायलोज लागू करने के साथ साथ हमने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है उसमें प्रत्येक गांव में डेयरी सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समिति का भी हमने पैक्स को निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात, आज पैक्स में जिस तरह से खाद्य भंडारण योजना हम लेकर आए हैं उससे सीधा उसका लाभ अब ये राशन की दुकानें हैं हमारे पैक्स भी ले पाएंगे। और साथ ही साथ अभी एफपीओ का काम अब तक पैक्स नहीं करते थे, लेकिन आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री की पहल पर अब 1100 एफपीओ खोलने का निर्णय भी पैक्स के द्वारा लिया है, जिससे पैक्स हमारे और मजबूत होंगे। अब पैक्स एलपीजी के गैस का वितरण भी कर सकेंगे। अब पैक्स पेट्रोल और डीजल के रिटेल जो है रिटेल हमारे पेट्रोल पंप भी लगा सकेंगे, उनके लिए प्रायोरिटी देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, जन सेवा केंद्रों का काम अब तक पैक्स पर नहीं होता था, लेकिन हमने सीएससी को भी इसमें जोड़ने का काम किया है। अब जन सेवा केंद्रों के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम पैक्स को मजबूत करेंगे, बाकी ठिकाना बनेगा। 300 प्रकार से ऊपर की सेवाएं जो जन सेवा केंद्र के माध्यम से मिलती हैं, हम पैक्स के माध्यम से भी हम देने का काम करेंगे। और अभी इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम पैक्स में हम रेल के रिजर्वेशन भी हम पैक्स से कर पाएंगे। हम आने वाले समय में हम हवाई जहाज के टिकट भी हम उसमें रिजर्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ जन औषधि केंद्र हम सब जानते हैं कि लगभग पूरे देश में 9,300 से ऊपर हमारे जन औषधि केंद्र हैं और उन जन औषधि केंद्रों के लिए अब तक पैक्स में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पैक्स जन औषधि केंद्रों को भी खोल पाएंगे, जिससे गांव का गरीब आदमी, गांव का किसान, शोषित वंचित
उन सस्ती दवाइयों का लाभ उठा सकता है और पैक्स में हम जाकर के उन दवाइयों को ले सकते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। अब पैक्स के साथ हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को भी हम जोड़ पाएंगे और इसके लिए भी हमने काम किया है। जिस तरह से हर घर जल से नल की योजना लगभग 13 करोड़ से ऊपर हमने परिवारों में नल से जल पहुंचाने का काम तो किया है, लेकिन अब तक पैक्स हमारे उसमें हिस्सेदारी नहीं लेते थे। जिस तरह से जल वितरण की समितियां गांव में बनती थी, अब पैक्स के लिए भी हमने वो व्यवस्था की है कि पैक्स अब जल वितरण का काम भी कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि बताया गया कि देशव्यापी मैपिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम भी किया है और ये लगभग 95% करीब हमने उस काम को पूरा कर लिया है। शीघ्र ही उस डेटाबेस होने से हम पूरे देश की एक तरह से मैपिंग करने का काम ठीक से करेंगे। हम शिक्षण और प्रशिक्षण को कैसे हम तेजी के साथ बढ़ाएं। लगातार जिस तरह से सहकारिता के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, तो हमारे लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए भी पूरी तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ सहकारी समितियों को हमने जेम पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने का काम किया है और अब क्रेता के रूप में अनुमति हमको मिली है। 40 लाख विक्रेताओं को इसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा। साथ ही साथ इस प्रकार की बहुत सी प्रकार की चीजें हैं जो पैक्स के माध्यम से हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि अभी हमारे एक साथी सारा के विषय में बता रहे थे। सारा का विषय इतना बड़ा विषय था, लगभग 10 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर थे जिनका पैसा सारा में डूबा हुआ था और ये यूपीए के समय से ये पैसा डूबा था और यहाँ पर देश के वो लोग जो इन्वेस्टर थे भूल चुके थे पैसा हमको मिलेगा। उन इन्वेस्टर में छोटे इन्वेस्टर थे, गांव के थे, किसान थे, शोषित थे, वंचित थे, एससी के थे। तब मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री जी ने बहुत कठोर कदम उठाते हुए और आज हम उसमें सफलता पाए हैं और सफलता ही नहीं पाए हैं, हमने 5000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट से पैसा रिलीज करा दिया है और 45 दिनों में उस पैसे की व्यवस्था वापस देने के लिए हमने पोर्टल भी लॉन्च किया है और उस पोर्टल पर निष्पक्ष तरीके से हम उस पोर्टल पर हम जाकर जन सेवा केंद्र में भी जाकर के, हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो जन सेवा केंद्र पर जाकर के हम उसे पोर्टल पर भर सकते हैं। भरने के बाद में 30 दिन तक हम उसका परीक्षण करेंगे। अगर वो सही इन्वेस्टर है, उसका खाता लिंक है, आधार लिंक है, तो निश्चित रूप से आने वाले 15 दिन में हम उसके पास पेमेंट भेजने का काम करेंगे और जब हमारा 5-4 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा उसके बाद हम जो शेष आगे पैसा जो रिलीज कराएंगे उस पैसे को आगे हम बांटने का काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूं आदरणीय सहकारिता मंत्री को इस बात का मैं इस सभा के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले अगर हित देखा तो गरीबों का हित देखा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इतने बड़े इन्वेस्टर हैं तो हम 10,000 तक के जितने इन्वेस्टर हैं पहले उनको पैसा देने का काम करेंगे, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना लगा हो, लेकिन पहले 10,000 तक का जो पैसा लगा हुआ उसको देने का काम करेंगे। तो आज मैं समझता हूं उन गरीबों पर, उन वंचितों पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है और मैं कह सकता हूं आज 22 लाख से ज्यादा लोगों ने पोर्टल पर अपने आए हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और वो उस दिशा में आगे बढ़े हैं। माननीय उपसभापति महोदय, जिस तरह से सहकारिता के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्रालय बनाने के बाद जिस तरह से काम शुरू किया है, मैं कह सकता हूं कि अगर हम सहकारिता की सक्सेस स्टोरी की हम बात करें, जैसे हम अमूल की बात हम कर रहे थे, इफ्को की बात हम करते हैं, हम क्रमको की बात हम करते हैं, नेफिड की बात हम करते हैं और छोटा सा प्रोडक्ट हमारा सबसे एक पापड़ है, लिज्जत पापड़ की बात हम करते हैं। जहां पर अमूल की हम बात करते हैं, लगभग 36 लाख महिलाएं उस अमूल से जुड़ी हुई है और 36 लाख परिवार मैं कहूंगा तो अमूल से जुड़े हैं। किसी ने भी 100 रुपया से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं किया है और 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 36 लाख महिलाएं आज लगभग 58,000 करोड़ का उसका टर्नओवर अमूल का है। तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आदरणीय रूपाला जी गुजरात से आते हैं और आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री जी जो सहकारिता के मास्टर भी कहे जाते हैं, उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तब मैं कहूंगा उसी तरह से इफ्को ने भी लगभग 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर हमारा किया है। साथ में छोटा सा इफ्को शुरू हुआ था, लेकिन आज लगभग 35,000 से ज्यादा भी
ज्यादा उनकी इफ्को की सोसाइटियां हैं। और आज हम इफ्को का केवल खाद ही नहीं बनाते हैं, हम इफ्को के साथ साथ नैनो यूरिया भी बनाने का काम किया है, हमने नैनो डीएपी बनाने का काम किया है। आज नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के माध्यम से जो हम काम करते हैं, देश पर जो हम उर्वरक पर जो सब्सिडी का लोड जो पड़ रहा है, मुझे लगता है कि नैनो यूरिया और ये हमारी नैनो डीएपी जब जाएगी तो हम उस वजन को भी घटाने का काम करेंगे। और जो वो यूरिया काम करती है उससे ज्यादा कहीं इफेक्टिव हमारी नैनो यूरिया भी काम करती है। आप जगह जगह जाकर हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं और आज लगातार उस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसी प्रकार से मैं कहूं कि हमने जहां मैंने सारी बड़ी संस्थाओं की बात की तो मैं लिज्जत पापड़ की बात भी करना मैं चाहता हूं। एक महिला ने कुछ महिलाओं को जोड़ करके एक समिति बनाने का काम किया और एक पापड़ बनाने का काम किया और आज वो लिज्जत पापड़ के नाम से प्रसिद्ध है। और लिज्जत पापड़ ये देश का ही नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्ट हमारा बन के रह गया है और 2000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर उस लिज्जत पापड़ का भी आता है। माननीय उपसभापति महोदय के जिस तरह से हमने लगातार सहकारिता के क्षेत्र में काम किया है और आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक हम लेकर आए हैं। अच्छा तो ये रहता कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो भी इसमें भागीदारी लेते, क्योंकि जिस तरह से सहकारिता आगे बढ़ रहा है, अभी $5 ट्रिलियन की बात जो हुई थी, मैं कह सकता हूं कि हमने 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात तो की है, लेकिन ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बिना सहकारिता के पूरी नहीं हो सकती। हम जिस तरह से हम रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि किस तरह से हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की लिमिट होती है, लेकिन सहकारिता के माध्यम से हम करोड़ों लोगों के लिए काम दे सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जिस तरह से 48 पहल हमारी की गई हैं और जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट जब होंगी तो हम कह सकते हैं कि लगातार उनमें हम बहुत अच्छा काम करेंगे। एक दूसरा विषय, अभी कुछ ही दिनों पहले बजट सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख पैक्स खोलने के लिए हमको कहा है और 2 लाख 5 वर्षों में पैक्स खोलना, उन क्षेत्रों में पैक्स कैसे हमारी जो है सभी जगह पहुंचे, सर्वस्पर्शी कैसे बने, समावेशी कैसे बने, तो हम कह सकते हैं सर्वव्यापी बनाने के लिए अब तक लगभग 1,60,000 पंचायत ऐसी थी जहां पर हमारी कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं था। उस कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए, उसको सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने के लिए 2 लाख पैक्स, वो हमारी पैक्स होंगी, हमारी मत्स्य की होंगी, हमारी डेयरी की होंगी, उनको करके हम पूरी तरह से पूरे देश को हम कवर करना चाहते हैं। कोई ग्राम पंचायत ऐसी न छूटे जिसमें हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उसमें न हो। माननीय उपसभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो अधूरी रह जाएगी। मैं कहूंगा कि अन्न भंडारण योजना, अन्न भंडारण योजना जो हमारी आई है, विश्व की सबसे बड़ी योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। उस अन्न भंडारण योजना में जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी देश की 18% पॉपुलेशन पूरे दुनिया की, और 18% पॉपुलेशन को केवल 11% हमारी लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड है। इससे हमारा किसान अपना खून पसीना बहा करके और उसके लिए पूरे देश के नागरिकों का पेटी भरता है और दुनिया की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे पास उसके भंडारण के लिए क्षमता नहीं थी। भंडारण को क्षमता केवल 47% थी। उस 47% क्षमता से ही हम अपना भंडारण करते थे। इस कारण से आप देखते होंगे जो किसान पसीने से जो अन्न उत्पाद पैदा करता है, उसके लिए जब भीगता हुआ देखते थे, सड़ता हुआ देखते थे, ये पीड़ा किसी और को नहीं हुई, ये पीड़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी को हुई कि मेरे किसान का पैदा हुआ अन्न किसी तरह से बेकार ना हो, सड़े नहीं, गले नहीं। उसका महत्व समझते हुए अन्न की कीमत, जिस तरह से अभी श्री अन्न के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप जानते हैं, इसी तरह से बढ़ावा जो देने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूं उस अन्न भंडारण योजना में हम पैक्स स्तर पर हम लगभग उनको हम अन्न भंडारण का हम गोदाम भी बनाने का काम करेंगे। हम वहां पर फल का, सब्जी का स्कोप है तो शीत गृह भी माइनस टेम्परेचर का बनाने का काम करेंगे। हम वहां पर माइनस टेम्परेचर के साथ साथ उसमें और जो टाइट कंटेनर की बात बनाने की वो भी बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कृषि यंत्र, क्यों वो आधुनिक कृषि करना चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि आधुनिक कृषि हो और किसान की पैदावार बढ़े, किसान मजबूत हो, किसान शक्तिशाली हो, लेकिन उसे आधुनिक कृषि करने के लिए उसके पास में आधुनिक यंत्र, कृषि यंत्र नहीं है। इसलिए हम उस गोदाम पर हम कृषि यंत्र भी खड़ा करने का काम करेंगे, जिससे किसान उस गोदाम से यंत्रों को लेकर जाएगा और अपना काम करके वापस वहां कर देगा।
और इतना ही नहीं कि अब तक जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में अन्न की गड़बड़ियां होती थी, हम स्थानीय स्तर पर उसका भंडारण करने का काम करेंगे और जब इनको वितरण की बात आएगी तो गरीबों के लिए वहीं से निकाल करके अन्न बांटने का काम भी करेंगे। इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है उसको भी बचाने का काम करेंगे। आदरणीय उपसभापति जी, अभी 3 मल्टी स्टेट पब्लिक सोसाइटी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय सहकारिता मंत्री जी ने किया है। उनमें हमारी एक ऑर्गेनिक मल्टी स्टेट पब्लिक सोसाइटी है, एक हमारी सीड की मल्टी स्टेट पब्लिक सोसाइटी है और दूसरी निर्यात की, एक्सपोर्ट की। तब मैं कहना चाहता हूं, आज देश ऑर्गेनिक खाना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्राकृतिक खेती की लगातार बात करते हैं, किसान करना भी चाहता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 3 वर्षों तक उसकी उपज कम होने के कारण से और उसकी उपज का मूल्य सही नहीं मिलने के कारण से किसान उस प्राकृतिक खेती करने से बचता है। आदरणीय उपसभापति महोदय, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूं और मैं केवल नाम के लिए किसान नहीं हूं, मैंने अपने हाथों से हल चलाने से लेकर, खुरपी चलाने से लेकर, फावड़ा चलाने से लेकर, धान की रुपाई करने से लेकर मैंने सारा काम किया है। इसी में जानता हूं किसान की कठिनाई क्या क्या होती है, उन कठिनाई को मैं समझता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए ऑर्गेनिक मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने का काम किया है। उस मल्टी स्टेट सोसाइटी बना करके हम जो आज देश जो हमारा एक स्लैब है इनकम टैक्स पेयर का हो सकता है या ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, लेकिन विश्वसनीयता का संकट है। विश्वसनीयता कैसे हो कि ऑर्गेनिक है, इसके लिए ऑर्गेनिक हमने ये मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने का काम किया है। हम ऑर्गेनिक टेस्ट के लिए हम लैब बनाने का काम भी हम करने जा रहे हैं, जिससे हम टेस्ट उसको करके और हम ऑर्गेनिक हम खिला सके। और केवल हम देश को ही नहीं, हम दुनिया को ऑर्गेनिक हम खिलाना चाहते हैं। दुनिया क्या खाना चाहती है, इसलिए हम उस तरह से किसान से पैदा कराना चाहते हैं और किसान के लिए सही मूल्य दिलवाना चाहते हैं। इसलिए हमने उसे ऑर्गेनिक मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने का काम किया है, जिससे किसान की इनकम कैसे बढ़े। इसी प्रकार से सीड की समस्याएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन मल्टी स्टेट सोसाइटी के माध्यम से हम छोटे छोटे किसानों से उनकी जमीन में हम बीज पैदा कराने का काम करेंगे और बीज के माध्यम से उनके लिए कैसे उसकी पैदावार उसकी बढ़े, ठीक हो, और कैसे उसकी इनकम बढ़े, इसकी हम चिंता करेंगे। और तीसरी सोसाइटी हमारी ऑर्गेनिक निर्यात एक्सपोर्ट, क्योंकि निर्यात हमारी चीजें नहीं होती थी, हम एक्सपोर्ट हम बनाने का काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट के माध्यम से हम किसान की चीजों को हम दुनिया में जो एक्सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी इनकम बढ़ेगी। तो मैं अपनी विषय को ज्यादा चर्चा न करते हुए मैं आता हूं इस बात पर कि मैं जितने काम गिराऊंगा तो मुझे लगता है कि शाम तक हो जाएगी। इतने सारे काम किए हैं, 48 पहले मैं गिराऊंगा तो बहुत हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथी सदस्यों ने बहुत सारी चर्चाएं कर दी हैं, उनको मैं रिपीट न करते हुए इससे हमारे फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो मल्टी स्टेट बिल आया, तब मैं कहना चाहता हूं कि धारा 45 ए से एल तक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना 97 संविधान संशोधन का इसमें प्रावधान है। ये संशोधन निर्वाचन सुधार लाएगा, जिससे प्रशासन में प्रभावशीलता दक्षता भी आने का काम करेगी। साथ ही साथ संशोधन के बाद केवल सक्रिय सदस्य निर्वाचन के लिए योग्य होंगे, समय पर निर्वाचन प्रक्रियाओं का मानकीकरण होगा। माननीय उपसभापति, इसमें साथ ही साथ कोऑपरेटिव गवर्नेंस, सहकारी सोसाइटी में शासन और पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड की संरचना, बैठकों, सदस्यों की सुधार में हम धारा 50 का प्रावधान इसमें किया है। बोर्ड बैठकों के आयोजन में अनुशासन आएगा, जिससे सहकारी समितियों के कार्यक्रम में सुधार आएगा, बैठकों की निरंतरता सुनिश्चित होगी। सीओ की नियुक्ति के लिए मानदंड के प्रावधान 51 के अंतर्गत दिवालिया घोषित व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा दोषित व्यक्ति सीओ बनने के लिए अयोग्य हुआ। बैंकों में सीओ की नियुक्ति के लिए आरबीआई द्वारा फिट एंड प्रॉपर मानदंड की तर्ज पर सीओ की नियुक्ति के लिए मानदंड बनाए जाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के मध्य सदस्यों में अनुशासन की धारा 30 के अंतर्गत कोई निष्कासित सदस्य पुनः प्रवेश पहले 1 वर्ष की तुलना में अब उसके 3 वर्ष तक अयोग्य रहेगा। समता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए धारा 41 के अंतर्गत बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीट में आरक्षित करने का काम किया और केवल महिलाओं के लिए नहीं, हमने अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 सीट का हमने आरक्षित प्रावधान करने का काम किया है। धारा 41 97वां संविधान संशोधन करने का इसमें प्रावधान। साथ ही महोदय, बोर्ड का सदस्य बनने में योग्यता धारा 43 के अंतर्गत
ऐसे सदस्य जिसकी इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के तहत वसूली के बकाया हो या किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति के अवक्रमण का जिम्मेदार निदेशक हो, अब वो व्यक्ति किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति का निदेशक बनने के लिए अयोग्य रहेगा। इसी तरह कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता धारा 49(2)E का भी प्रावधान किया है। इसमें भर्ती नीति के लिए मानकीकरण निर्धारित होंगे, जिससे भर्तियों में भाई भतीजावाद और पक्षपात दूर करने में मदद हमको मिलेगी। अभी हमारे सदस्य महोदय ने कहा था लीडरशिप की, तो मैं कहूंगा कि हमने आपकी उसमें चिंता कर ली है और उसमें आपके खंड 15 में सब क्लॉज 6 में स्पष्टीकरण में नातेदार की जो परिभाषा दी गई है, इसमें इसलिए कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कर्मचारियों की भर्ती में की प्रक्रिया में पारदर्शिता धारा 49(2)E का प्रावधान किया है। इसमें भाई भतीजावाद पक्षपात दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ कार्यकारी समितियों से बेहतर शासन सुनिश्चित धारा 53 बोर्ड द्वारा कार्यकारी समिति या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति के उपनियमों के अनुसार समितियों और समितियों का गठन भी करेंगे। ऑडिट एंड एथिक्स समिति का गठन भी इसमें रहेगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तथा डिसिप्लिन केंद्रीय पंचायत द्वारा पैनल से ऑडिटर की नियुक्ति धारा 70(2)(3)(a) के तहत प्रावधान किया है, जिसमें केंद्रीय पंचायत द्वारा स्वीकृत पैनल से ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी समितियों के ऑडिट रिपोर्ट को संसद में रखा जाएगा। संशोधित प्रावधान से ऑडिट और अकाउंटिंग में अनुशासन पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑडिट और अकाउंटिंग के निर्धारित मानक के प्रावधान से पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन धारा 73 में इसका प्रावधान रहेगा। जो जब तक ऐसे मानकों का निर्धारण न हो जाता, तब तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के मानक ही मानक होंगे। सहकारी बैंकों को RBI के मानकों को अपनाना होगा। इससे ऑडिटिंग में एकरूपता सुनिश्चित होगी, जिससे पारदर्शिता वित्तीय अनुशासन भी होगा। सदस्यों को तो इस तरह से इसमें सारे प्रावधान हमने किए हैं और मैं कहूंगा कि अंत में 2 विषय अपने कहते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा। इसमें जो हमारे साथी सांसदों ने सुझाव दिया है, मैं उनको स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस कोऑपरेटिव में टैक्स से संबंधित बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो सहकारिता को बढ़ने में अवरोध पैदा करते थे। तो हमने टैक्स की सभी रियायतों को उनको ठीक करने का काम किया है। हमने रियायतों को या तो टैक्स को खत्म करने का काम किया है या टैक्स को घटाने का काम किया है। तो एक चीज को बताऊंगा तो शायद विस्तार से आपको दे लगेगी। चीनी मिल का जिस तरह से आपने जिक्र किया चीनी मिलों का, उसमें 10,000 करोड़ तक का सीधा रियायत हमने उसमें देने का काम किया है। इसी तरह से बैंकिंग के क्षेत्र में जो निकासी पर हमको टैक्स देना पड़ता था, उसको या तो हमने खत्म किया है या हमने कम करने का काम किया है और साथ ही साथ हमने निकासी पर उनकी निकासी की लिमिट भी बढ़ाने का काम किया है। 1 करोड़ से 3 करोड़ किया है और हमने 20,000 से 2 लाख करने का काम किया है। मैं अपनी विस्तार से चर्चा न करता हुआ लगातार जिस तरह से हमने हर क्षेत्र में काम किया है, तब मैं कह सकता हूं कि मैं अंत में आप सबसे निवेदन करता हुआ इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन जो हमारा संशोधन बिल है, इससे बहुत बड़े लाभ होने वाले हैं और सहकारिता को जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उस दिशा में सहकारिता इसके माध्यम से चलेगी और सहकार से समृद्धि का विजन और साथ ही साथ सहकारिता आंदोलन जमीनी स्तर तक और हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने का जो विचार माननीय प्रधानमंत्री का है, वो पूरा करने का काम करेंगे। अंत में महोदय से मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। I shall first put the amendment moved by Dr. John Britas for reference of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: माननीय श्री विकास रंजन भट्टाचार्य, डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री एलामारम करीम, श्री जोस के मनी, श्री ए रहीम, श्री तिरुचि शिवा, डॉक्टर वी शिवदासन,
with instructions to report by the last day of the first week of the next 261 first session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. The question is that the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 1 by Dr. A.D. Singh. Number 24 and 25 by Dr. John Britas. Mr. A.D. Singh, not present. Dr. John Britas, not present. Members absent. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 2 by Sri A.D. Singh. Number 26 by Dr. John Britas. Mr. A.D. Singh, absent. Dr. John Britas, absent. Members absent. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clauses 4 and 5 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 4 and 5 are adopted. Clause 6 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 16 by Sri Elamaram Karim. Number 22 by Sri A. Rahim. Number 27 by Dr. John Britas. Members absent. Sri Elamaram Karim, absent. Sri A. Rahim, absent. Dr. John Britas, absent. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Please, शांति बनाए रखें. Clause 7 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There is one amendment. Number 28 by Dr. John Britas. Member absent. Dr. John Britas, not present. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There is one amendment. Number 29 by Dr. John Britas. Dr. John Britas absent. Member absent. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clauses 10 and 11 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 and 11 are adopted. Clause 12 stands part of the bill. There is one amendment. Number 3 by Sri A.D. Singh, absent. Member absent. I shall now put clause 12 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 is adopted. Clause 13 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 4 by Sri A.D. Singh. Number 17 by Sri Elamaram Karim. Number 23 by Sri A. Rahim. Sri A.D. Singh absent. Sri Elamaram Karim absent. Sri A. Rahim absent. Members absent. I shall now put clause 13 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 13 is adopted. Clause 14 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 14 is adopted.
Clause 15 stands part of the bill. There are two amendments. Number 18 and 19 by Sri Elamaram Karim. Sri Elamaram Karim absent. Member absent. I shall now put clause 15 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 15 is adopted. Clause 16 stands part of the bill. There is one amendment. Number 5 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. Member absent. I shall now put clause 16 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 is adopted. Clause 17 stands part of the bill. There are three amendments. Number 6 by Sri A.D. Singh. Number 20 by Sri Elamaram Karim. Number 30 by Dr. John Britas. Sri A.D. Singh absent. Sri Elamaram Karim absent. Dr. John Britas absent. Members absent. I shall now put clause 17 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 17 is adopted. Clause 18 stands part of the bill. There is one amendment. Number 7 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. Member absent. I shall now put clause 18 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 18 is adopted. Clause 19 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 19 is adopted. Clause 20 stands part of the bill. There are three amendments. Number 8 by Sri A.D. Singh. Number 31, 32 by Dr. John Britas. Members absent. Sri A.D. Singh absent. Dr. John Britas absent. I shall now put clause 20 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 20 is adopted. Clauses 21 and 22 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 21 and 22 are adopted. Clause 23 stands part of the bill. There is one amendment, number 33 by Dr. John Britas. Dr. John Britas absent. Member absent. I shall now put clause 23 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 23 is adopted. Clause 24 stands part of the bill. There are two amendments. Number 9 by Sri A.D. Singh. Number 34 by Dr. John Britas. Sri A.D. Singh absent. Dr. John Britas absent. Members absent. I shall now put clause 24 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 24 is adopted. Clause 25 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 25 is adopted. Clause 26 stands part of the bill. There is one amendment. Number 10 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. I shall now put clause 26 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 26 is adopted. Clauses 27 to 30 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 27 to 30 are adopted. Clause 31 stands part of the bill. There are two amendments. Number 11 by Sri A.D. Singh. Number 21 by Sri Elamaram Karim. Sri A.D. Singh absent. Sri Elamaram Karim absent. I shall now put clause 31 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 31 is adopted. Clauses 32 and 33 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 32 and 33 are adopted.
Clause 34 stand part of the bill. There is one amendment, number 12 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. I shall now put clause 34 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 34 is adopted. Clauses 35 to 45 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 35 to 45 are adopted. Clause 46 stands part of the bill. There is one amendment, number 13 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. Member absent. I shall now put clause 46 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 46 is adopted. Clause 47 stands part of the bill. There is one amendment, number 14 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. I shall now put clause 47 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 47 is adopted. Clause 48 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 48 is adopted. Clause 49 stands part of the bill. There is one amendment, number 15 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. I shall now put clause 49 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 49 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Honorable Minister Sri V.L. Verma to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पास हो. Passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now the mediation bill 2021. Honorable Sri Arjun Meghwal ji to move a motion for consideration of the mediation bill 2021. Honorable Deputy Chairman, sir, with your permission, I move that the bill to promote and facilitate mediation, especially institutional mediation, for resolution of disputes, commercial or otherwise, enforce mediated settlement agreements, provide for a body for registration of mediators, to encourage community mediation and to make online mediation as acceptable and cost-effective process, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. कुछ बोलना चाहेंगे माननीय? मैं चाहता हूं कि सदस्य बोल जाएंगे उसके बाद ही. धन्यवाद. धन्यवाद. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Amar Patnaik, Honorable Dr. Amar Patnaik. Thank you, sir. Sir, I would have been belonging to legal fraternity. I would have been very happy had other legal luminaries from the vacant benches would have been present here to listen to this deliberation. So mediation as a form of dispute resolution has always been there. It was a part of the Code of Civil Procedure 1908, Arbitration and Conciliation Act 1996, Companies Act 2013, the Commercial Courts Act 2015, Consumer Protection Act 2019, in the Hindu Marriage Act. So the concept of mediation was always there. But what is so significant about this bill, and I feel privileged to be speaking on this, is that there was no standalone mediation bill in this country, and this is the first such bill after independence which is being introduced in the House. So it is my privilege to be speaking on this bill.
particularly belonging to the legal fraternity. So the point here is, in 1908, the Code of Civil Procedure was there. But why this culture of mediation was not there in our country? Why this was not happening, even if so many bills were there? And why the need for a separate bill? So there are 5 basic reasons for it. So the basic reasons were that the judges didn't always refer cases for mediation, even though they accepted that this culture is very necessary for removing pendency in our courts. In our courts, for example, sir, now approximately 5 crore cases are pending. So mediation, alternate dispute resolution mechanism is an effective way. But the judges, for example, in Delhi High Court, only 2.6% of the total number of cases in the High Court were referred for mediation. The second point was there was a lack of clarity on enforceability, whether the mediated settlement would be enforceable in the court of law. The third point was there were some myths associated. The myths were, for example, that mediation is a lesser form of justice. Unless you go and get a judgment from the court, it will not be accepted as a great piece of judgment. The fourth point was that even the lawyers, they were not incentivized to get cases referred to mediation to settle the cases. Now, because of these factors, I think the current bill addresses many of these issues, and I feel this will be a standalone, significant legislation for the country, and this will go a long way in improving the ease of doing business in this country. It will also solve a number of problems of pendency in the lower courts, particularly for people who belong to the disadvantaged section, people who are poor, people who can't afford. So the unique thing about this bill, as the bill suggests, is to promote and facilitate mediation, particularly institutionalize the process of mediation. So institutional mediation, community mediation, online mediation, all these have been enabled in this particular piece of legislation. And therefore, it is a very significant piece of legislation. Now I'll come to some of the provisions of the bill, sir, point by point, and make suggestions to the Honorable Minister who is present here, in case we can actually incorporate some Section 28(2) of the bill states that mediated settlement agreements shall be enforced in the same manner as if it were a judgment or a decree passed by the court. Now, this basically means that even if you win a case in India against an international, there is a person who is your litigant, you will not have the advantage of worldwide global enforceability. You have done so much, you might win the case, but for enforceability, you will not be able to take advantage of the Singapore Convention. So why to unnecessarily have this particular provision? Be in compliance with the Singapore Convention, in which case our people will tend to get the benefit. Those who win against an international opponent in our country, they will be able to enforce it globally. They will not be prevented by our own legislation from going to taking advantage of the Singapore Convention. Now I'll come to the second point relating to the definition itself. Now, on the definition of mediation, which is there in section 4, I see that this is a very wide, expansive definition. I completely support, and there's a word there, conciliation. People believe conciliation is a separate process, but I think the bill has done right, the government has done right by including conciliation, because the Supreme Court has now held in the Efflon's judgment that both mediation and conciliation can be put on the same footing. So I think this is a good piece of definition that is there provided in the bill. The second point that I wanted to speak is about the confidentiality clause for online
online mediation. The confidentiality clause has been provided. It is at the heart of the entire mediation process, but for violation of confidentiality, the penalties and offences on either the mediators or anybody is not prescribed. I think this could be provided in the rules. There is no certainty, there is no provision for enforcing certain international mediated settlements. For example, if an Indian person is going through a process against an international opponent in a foreign soil, where does he get it? Because you are already precluding the possibility of global enforceability by having that provision in which the Singapore Convention advantage cannot be taken care of. There is a point I want to make relating to composite reference mediation. Sometimes out of a contract, several sub-agreements happen. Each one of them might get into separate mediation process. If you allow each one of them to go through the entire process, then you will be unnecessarily wasting time. So a provision could probably be made in which the concept of composite reference mediation in the Mediation Rules 2021 could be brought in. The provision, in the bill, there is a provision which says that the act will not apply to pending proceedings. When the pendency is already huge, and this particular act brings in the element of enforceability of the mediated settlement, why not apply it to the previous cases? Because in such cases, there will be seriousness that the government would be showing. The another point is relating to community mediation. In community mediation, the option has been left to the SDM to decide. But I think in community mediation, just like our sarpanches used to do in Punch in the earlier times, I think it should be made mandatory for the SDM to involve the community leaders, in which case the mediation would be more successful. Mediation will be accepted by both the parties. It will be more having the more force of law, in the sense the local community people are also supporting it. So make it mandatory for the SDM. There is a provision which is relating to requiring central government approval before issuing regulations. Now, in the Bar Council of India regulation Act, and in the National Medical Commission, which was passed recently, there is no such requirement. In professional kind of jobs or professional services, I think this kind of reference back to the central government each time may delay the process. However, I commend the government for reducing it from 180 days, 6 months plus another 6 months, to only 6 months. I think this is very admirable. The last point which I wanted to make is something on which the standing committee has taken a view which is different from the original bill. The government has accepted the standing committee's view, but I would like to support the government's previous view, which was to make the pre-litigation mediation mandatory in phases. If you look at Justice Ramana's first speech in the Singapore India Mediation Summit 2021, he says that mediation should be made mandatory as the first step for dispute resolution, and the law should be framed in this regard. The government in its wisdom had brought it. There was, of course, a question as to whether the right to judicial remedy, which is provided as a fundamental right, would be hindered because of this provision. I think a way around could have been found out. But unless that is done, people will not be serious about mediation culture in this country, and settlement of disputes may not happen to the desired extent, even though the law is very robust. Lastly, sir, the government is the main litigant in several cases. And I think instead of completely taking government, state, central, every agency of government out of this entire process, a solution would have been found in which some amount of cases through the mediation process, which has enforceability, could have been provided in the Act. This was also a recommendation of the standing committee. I think you would probably like to reconsider it.
Once again, I support the bill. As I said, this is the first standalone mediation bill in this country, and it's a significant piece of legislation. I completely support the bill. Thank you so much. Sri Bhuvaneshwar Kalita, BJP. Time is 10 minutes. Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on this bill, and I congratulate you to see in the chair. My heartiest congratulations. This bill actually is related to our traditions, our traditional society, where we had the mediation tradition in this country from centuries. As you all know, it was strengthened by the panchayat system, and in the panchayat, the elders, the village elders and the society elders sit and mediate things so that it doesn't and to keep harmony in the society. Later on, the Britishers brought this mediation system to the judicial system, to the court system, but over the years, because of the Singapore Convention on Mediation, where India is a signatory, we had to shift to the mediation system, and over the years, the mediation process has been revolutionized, and I congratulate the government led by our other Sri Narendra Modi ji and the minister concerned for bringing this bill, bringing this revolutionary bill to revolutionize the judicial system, the judicial process in this country. Madam, the object of the bill is to facilitate and promote mediation in India, particularly institutional mediation, for the resolution of disputes, encourage community mediation, and make online mediation an acceptable and cost-effective process. Madam, I will not prolong my speech. I will be within the limited time that has been given to me. But I must highlight the key. I must speak on the key highlights of this bill. One of the key highlights is domestic and international mediation of its application. The bill defines domestic mediation as mediation conducted in India involving parties who reside, are incorporated, or have business in India, and where the mediation agreement states the application of Mediation Act 2021. It also recognizes international mediation involving commercial disputes with at least one party having a foreign connection. Madam, the mandatory pre-litigation mediation about mediation and settlement, about which the standing committee, this bill has gone to the standing committee, and many of the standing committee recommendations has been incorporated in this bill. One such recommendation was from the standing committee: pre-litigation mediation should be reconsidered, made optional, and introduced in a phased manner to avoid case delays. Madam, this bill makes pre-litigation mediation mandatory for disputes in accordance with the provisions of the bill before filing any suit or proceeding in any court or tribunal. Parties must attend at least 2 mediation sessions, and failure to do so without reasonable cause may incur costs. So there is enough scope for mediation. There is enough scope to solve their problems out of the court. So this pre-litigation mediation is one of the important part of this bill. And another important standing committee suggestion was the number of disputes in the first schedule should be reduced to ensure more cases to go through pre-litigation mediation. Mediation should be allowed in cases involving disabled individuals and those affecting the rights. So, Madam, disputes not fit for mediation, which includes certain disputes like prosecution cases,
disputes affecting third-party rights, and matters related to tax allocation, the central government can amend this list. The mediation process and time limit, about which the standing committee has said that a provision should be included in the bill for punishing breaches of confidentiality in mediation proceedings. The timeline for mediation should be reduced to 90 days to 60-day extension instead of 180 days. The definition of international mediation should be revised to align with the Singapore Convention for cross-border enforcement of settlement. As I said earlier, in the bill, mediation proceedings are confidential, and parties may withdraw after the first two sessions. The bill sets time limit of 180 days for mediation, extendable by an additional 180 days with the consent of the parties. Madam, another very important issue here in this bill is the ground to challenge the mediated settlement agreement. As we know that there are many grounds, because the settlement between the parties may not be acceptable. So there are challenges in mediated settlement. The mediated settlement agreement, including fraud, corruption, impersonation, and disputes not fit for mediation. So these are the excluding clause, and the most important point is the recognition of institutional mediation. We have accepted it, and the Mediation Council of India will regulate these provisions. Another, we are going through a global transformation scenario where online mediation has become very important, and this bill recognizes that online mediation, allowing parties to engage in pre-litigation mediation using applications and computer networks with written consent. Madam, the establishment of Mediation Council of India, which was also suggested by the Standing Committee, the bill provides for Mediation Council of India, and the Mediation Council of India should be the sole authority to regulate all mediation service providers and institutes. Further, Mediation Council should also be constituted in all states that will function under the control of Mediation Council of India. These have been accepted, and this is one of the highlights of the bill. With this, I conclude, madam. Thank you very much. Sri S. Niranjan Reddy. Thank you, Madam Chairperson. My party supports the bill. There are many reasons why the bill needs to be salutary. It has been spoken about. Given the short time, I would rather focus on a few things that I think the government may have to be aware of. First, Madam, I feel that the pre-litigation, mandatory pre-litigation mediation that has been provided under Section 6, in the longer run will be very useful. But I have one concern which I wanted to bring it to the notice of the government. First, that if this pre-litigation mediation is mandatory, it means that the moment the bill is passed, no person in India, in any Mofussil area, in any district court will be able to file a civil suit from the next date, because the courts will say you will have to do a mediation. Very good suggestion, because in the long run it will help. My suggestion for the government, therefore, Madam, is that first they must ensure that the mediation infrastructure is created, because there's a Mediation Council of India. They will have to train people. People will have to be registered as mediators. The moment that happens, then I think this provision can be enforced. Thankfully, the government has thought through. The government has provided in Section 1 that it can bring into force various sections at different times. And the government has been doing that in IBC, in Companies Act, where different provisions have been brought into force at different times. So my first concern, therefore, sir, is, Madam, is that if this act is passed, if this section is notified immediately, it may create a lot of problems for litigants who are going to the court for the purpose of seeking a relief. The second concern I have, Madam, is that
there is a provision now made that because there will be a pre-litigation mediation which is mandatory, if any party needs an urgent order, they will have to go to the court for the purpose of seeking an interim relief. That is section 8 of the proposed bill. This is again a very good feature because eventually when pre-litigation mediation becomes mandatory and enforceable as and when government notifies it, we will need a provision like this where some person having an urgent necessity of an interim order may have to go to court. But the problem, ma'am, I see is that if some person approaches the court and takes an interim order, there is a similar provision under the Arbitration Act, which is section 9. There is no appeal provided against this order. And quite a few times we see that people go to the court, the trial court may make a mistake in giving an order. At least one appeal needs to be provided. I think the government decided not to have an appeal provision because it might delay the process. While I understand the reason why they are not providing for an appeal, I would request the government to consider if they would want to make one of these first round of an order made in an interim, like under section 9 of the Arbitration Act, any interim order, there is an appeal that can be maintained to the court, which regularly hears the appeal. Then the third concern which I have, because the committee recommended that the mediation period needs to be reduced from 180 days. The Act now provides for 180 days plus 180 days. While I understand the reason that they may want to be practical to ensure that it is appropriate, that the mediation actually has the time space for ensuring it is going to work out. Once the pre-litigation mediation is going to be made mandatory, as and when the government decides to notify it, then if some person wants to delay the litigation. In litigation, madam, one party will always be interested in delaying it because they benefit. Then 180 days plus 180 days in pre-litigation mediation would mean for a period of 1 year, except for the interim order which is not appealable, a party may not be able to go to court. This I would request the government to consider once. Then the last of the suggestions I have is the mediation service provider can be approached for appointing a mediator where two parties are not able to agree. But when they approach the mediation service provider, the Act provides that this service provider must appoint a mediator within 7 days. There is no default clause because we have seen under the Arbitration Act when there is a section 11 when person can approach the court. We have seen for years together the arbitrators are not appointed. So my recommendation therefore would be that if a person is not appointed as a mediator within 7 days by the mediation service provider, maybe the government may need to think if they would want to enable a party to approach the court. My last quick suggestion, sir, is any mediation that is procured under a Singapore Convention outside India that has not been made enforceable in India. India is doing this mediation bill by virtue of being a signatory to the Singapore Convention. My recommendation would be quite like the Indian mediation settlements would be enforceable outside. Outside settlements will become enforceable in India if they were to make a provision for enforcement at the appropriate stage. I thank the chairperson, vice chairperson for granting me the opportunity. I support the bill. Sri Abdul Wahab. Absent. Srimati S. Pangnan Konyak. Honorable Vice Chairperson, ma'am, thank you for giving me this time. As one of the means of alternative dispute resolution, the concept of mediation has been discussed in the country for a very long time. The August House is aware that mediation is a method of resolving conflicts, disputes, where two or more parties arrive at a compromise solution with the help of a neutral party, specifically a mediator. A mediator is not a judge, but rather a facilitator. While there are certain laws like the Companies Act, there is no standalone legislation on mediation. The mediation bill seeks to meet that particular requirement. If the bill is passed, it can change the legal and judicial landscape of the country for the better. Mediation is a cheaper and faster means of ensuring dispute settlement. It goes without saying that the judiciary in our country is burdened with a huge backlog of over 4 crore cases. We are well aware of the fact that it would take decades to clear all the backlogs. The mediation bill, which seeks to institutionalize mediation for civil and
commercial disputes, as well as setting up of a Mediation Council of India, is a step in the right direction. The bill defines mediation as a process whereby party or parties request a third person referred to as a mediator or mediation service provider to assist them in the attempt to reach an amicable solution to a dispute. This bill would provide a uniform procedure to be followed for mediation in the country. To my understanding, it would usher in a robust mechanism for solving disputes. Besides, mediation is not a new or recent thing in our country. It is something which has been in practice for centuries. In fact, it exists to this day, especially in rural India. Having a specific law on mediation would provide sanctity to this mediation process. Most importantly, a law on mediation is of the utmost necessity, given the fact that India is also a signatory to the Singapore Convention on Mediation. An effective dispute resolution process means reducing the burden on the courts, saving time, resources, and litigation costs, among many, not to mention that it would have a significant impact on the economy, as well as promote the ease of living for citizens, access to justice, and rule of law. The mediation bill would be a game changer in many ways. The bill provides for the mediation process to be completed within a period of 180 days. Pre-litigation mediation has also been made voluntary instead of mandatory. Further, to fulfill the objectives of Digital India, the bill also provides for online mediation. Parties can also withdraw from mediation proceedings or request for change of mediator. Provision for international mediation has also been provided for in the cases where one party is other than that of Indian nationality. Under Clause 8 of the bill, a party may, in exceptional circumstances before the commencement of or during the continuation of mediation proceedings, file appropriate proceedings before a court or tribunal of competent jurisdiction for seeking urgent interim measures. The establishment of a Mediation Council of India will also go a long way in ensuring stability and smooth functioning of the mediation process. An important feature of the mediation bill is the community mediation, where any dispute likely to affect peace, harmony, and tranquility among families or residents of or any area or locality may be settled through community mediation with prior mutual consent of the parties to the dispute. Clause 28 of the bill provides that mediated settlement agreement resulting from mediation is final and binding and enforceable in accordance with the provisions of Code of Civil Procedure 1908, in the same manner as it were a judgment or decree passed by a court. There are many other provisions which highlight the rationality of this bill and why it is of utmost necessity to the nation. I have touched upon only a few crucial points which needs to be emphasized. As stated earlier, mediation will be a game changer. It will change the way the justice is delivered in the country. The fate of the common man will be restored. I say this with a sense of conviction, having witnessed conflict resolution through mediation. Take the case of my state, Nagaland. Most of the times, disputes are solved amicably and swiftly with the intervention and involvement of a mediator. In most cases, it is a village council between families. And we also have our customary court, where disputes are taken to the Dobashi court and solved there instead of going to the legal judiciary. Nagaland has seen its fair share of conflicts between the security forces and various Naga political groups, as well as between Naga political groups. Even in such cases, civil society organizations have played the role of mediators and have successfully brought an end to conflicts, as a result of which there is relative peace in the state. Although citizens in Nagaland can take the legal route, and which they do, majority of the Naga populace prefer to settle disputes by way of customary laws. Notwithstanding the fact that customary laws have always been a part of Naga society, most Nagas opt for it because it ensures swift justice, if that is the appropriate term. Even in cases of theft, robbery, boundary disputes, etc., one would find that mediation by a third party is the preferred method of settling disputes. The point I'm trying to make is that the proposed mediation bill will bring concrete and monumental changes. The common man, who usually has to wait for years, even decades, and will be able to breathe a huge sigh of relief once this becomes a law. In this country, justice for many is a luxury. We cannot allow it anymore if we are to move forward as a society. A country burdened with late delivery of justice cannot be a just society. With these words, I wholeheartedly congratulate our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our
our Honorable Union Minister, Shri Arjun Ram Meghwalji, for this momentous bill, and I support this bill. Thank you. Shri V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Madam. On behalf of my party, YSRCP, and my leader, YS Jagannath Reddy Garu, I rise to support this bill. There are 4 points which I would like to bring to your notice. The first point is, I draw your attention and the attention of the Honorable Law Minister to clause 6, 3, subclause 3. Sir, the clause reads like this: for the purpose of subsection 1 and subsection 2, unless otherwise agreed upon by the parties, the mediator, there are 4 subclauses, 4 subclauses, that is, registered with the council, empaneled by the court annexed mediation center, empaneled by the authority constituted under the Legal Services Authorities Act 1987, and not or, not OR, and empaneled by the mediation services provider registered under this act. Madam, I can say that it is impossible for any person to become a mediator when all the 4 clauses are to be complied with. In reality, government should have made it at least RRR, ORR. One of the clauses, 4 clauses, could have been complied with. So therefore, I request the Honorable Law Minister to make suitable amendments to this bill in this regard. Crore cases are pending in various courts in civil cases. At present, before this bill is enacted, there are only 90,000 cases per annum are being disposed of by way of arbitration or mediation, and it is only it is less than 1% of the pending cases in the civil court. So in the way, see, after this enactment, unless the number of mediators are increased substantially by 100 times. As of 2022, there are 16,000 mediators working and 570 mediation centers are there. Unless this is increased by 100 times or even more than 100 times, the purpose for which this enactment is being made will not be fulfilled. So therefore, I request the Honorable Minister to increase the number of mediators and also increase the number of mediation centers, Madam. Madam, see, the Mediation Council of India. The next point is, the Mediation Council of India is totally responsible for the mediation. Therefore, the Government of India, the Law Ministry should ensure that the trained personnel and also the persons with judicious application of mind should be there in the Mediation Council of India, so that the purpose of the bill would be achieved. The next point, Madam, community mediation. This is very, very important. I request the Honorable Law Minister to make note of it. There are certain delicate political issues which cannot be solved otherwise. They can be solved through community mediation. For example, widening of the roads and the religious matters, and then etc. Those cannot be settled otherwise. It can be settled through community mediation, Madam. The next point, Madam, the bill provides mediation to be completed within 180 days. Sir, this 180 days, of course, it's good that mediation should be completed in 180 days. But however, there are no timelines fixed on the courts to refer the matter to pre-litigation mediation. There is no time limit that has been fixed. There is no time limit that has been fixed to appoint the mediator upon the request of the parties. There is no time limit. There is no time limit for confirmation by the court of the mediated settlement agreement. So therefore, there has to be time limit fixed even for all these 3 issues which I have referred to, Madam. And the last point, Madam, the establishes promoting the mediation given the size of the country. Our country is very large in size, and there is a need to decentralize the mediation process
and by establishing the mediation councils in the states also. Therefore, when there are 29 states or 30 states, and 30 state councils are also established, like medical council and bar councils. With this, we support the bill. Thank you very much. Dr. M. Thambidurai. Absent. Sri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मंत्री श्री मेघवाल जी को बधाई देना चाहता हूं। क्या जिस बिल पर चर्चा हो रही है वह एक कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो काम आजादी के बाद तुरंत हो जाना चाहिए था, हमने दशकों उसको बर्बाद किया। भारत एक ऐसा देश है जो मल्टीलिंगुअल है, मल्टीकल्चरल है। जिस देश में 6,64,369 गांव हो, 4,535 कम्युनिटीज हों और 645 ट्राइबल कम्युनिटीज हों, उस राज्य में जो न्याय का सिद्धांत है, मैं केंद्रीय न्याय मंत्री से कहूंगा कि जो न्याय का सिद्धांत है वह सिर्फ यदि कानून पर आधारित होगा तो देश उलझता रहेगा। और इसी उलझन के कारण जो यूरोप का हम पे प्रभाव था, जिस प्रभाव के कारण स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी यानी समाज का राज्यकरण कर दिया गया था, यह जो कानून है यह राज्य का समाजीकरण कर रहा है, यानी समाज के आधार पर राज्य के सामने की समस्याओं का समाधान करना। जिस राज्य में बहुसांस्कृतिकवाद हो, जिस राज्य में बहुत से समुदाय हो, अभी हम नागालैंड के साथी को सुन रहे थे, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा नॉर्थ ईस्ट से। वहां एक खासी समुदाय है। खासी समुदाय में दरबार नाम की एक संस्था है जिसका लीगल एंटिटी नहीं है, वो उसका सोशल एंटिटी है। दरबार में एक सरदार होता है, वे चुनते हैं और दरबार का जो फैसला होता है वो कम्युनिटी पर लागू होता है, समुदाय पर लागू होता है। यानी कि पंचायत व्यवस्था से लेकर दरबार तक, जिस पंचायत व्यवस्था को हमने भारत में अपनाया, सदियों से हमने अपनाया, इसी कारण से चार्ल्स मेटकाफ ने ब्रिटिश राज में भारत के गांवों को लिटिल रिपब्लिक कहा था, एक छोटा गणतंत्र कहा था। भारत गणतांत्रिक गांवों का एक समूह उसने बताया। और मैं बताना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पर जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी, 5th सेलेक्ट कमेटी बनी थी, 1912 में जो उसने रिपोर्ट किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। उसने भारत की न्याय व्यवस्था को गांव आधारित, समुदाय आधारित बनाने की बात की थी 1912 में, जो कि आजादी के बाद के नेहरू युग के शासकों को समझ में तब तक नहीं आया। जिसमें उसने कहा था कि भारत के गांव एक छोटे संप्रभु राज्य की तरह हैं। भारत का गांव जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक एक स्वायत्तता, संप्रभुता है, उस लिटिल होल, जिसने कहा था एक छोटा लिटिल सोवरेन होल जो है, उस गांव को, उस समुदाय को, उस ट्राइबल कम्युनिटी को न्याय के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि मलेशिया एक ऐसा देश में जिसकी एक संस्था है रकून टेटंगा, जिसका मतलब है पीसफुल नेबर क्रिएट करना। इजराइल में सुलह सिस्टम है जिसमें कल्चरल टूल के आधार पर जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाना। मैं इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम मानता हूं कि कम्युनिटी बेस्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात कही गई थी, उसमें समुदाय को एक आधार बनाया गया है। इस समुदाय को आधार नहीं बनाने पर आज हम देखते हैं कि न्यायालयों में एक बड़ी संख्या में ऐसे केसेस हैं जिसका निपटारा न्यायालय करने में जटिलता का अनुभव करता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातों का मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात, जब हम न्याय के सिद्धांत पर जाते हैं कि हर भारत के समुदाय की अपनी परंपरा है, अपनी आस्था है, अपने तौर तरीके हैं, तो मैं न्याय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भारत में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म समुदाय स्तर पर रहे हैं उसमें बहुत ही विविधता रही। तो ट्राइबल कम्युनिटी का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो खासी में है, जो मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जो मेन लैंड में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, उन सभी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को पर एक समाधान पर
एक अच्छा शोध होकर हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करें। कि कई देशों में, यूरोप के कई देशों में कम्युनिटी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई है। तो एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विविधता और बहुलता का स्थान होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आता है कि जस्टिस विदाउट लॉ, साधारणतः जस्टिस का सिद्धांत कानून पर आधारित है, लेकिन हम जब सोसाइटिफिकेशन ऑफ स्टेट हमने जब किया, जब राज्य का समाजीकरण करने लगे, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि हम कानून के बाहर जाकर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करें। राम जन्मभूमि के आंदोलन में इसका एक बहुत बड़ा कम्युनिटी डिस्प्यूट को समझाने का एक प्रयास हुआ था, जिसमें बहुत अधिक तक भारतीय राज्य को सफलता मिली। अंततः मैं कहना चाहता हूं, जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड की बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और इस डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, भारत के संविधान के तहत भारतीय परंपरा, भारतीय व्यवस्था, जो हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखा, जो हमने दंड नीति में, महाभारत के दंड नीति में देखा, उन सब के आधार पर भारत में जो एक अच्छी विरासत और परंपरा है, उस विरासत परंपरा के आधार पर जो कानून बनाने की कोशिश हो रही है, यह कानून निश्चित रूप से भारतीय राज्य के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय उपसभापति महोदया, आज ये एक ऐतिहासिक बिल मोदी जी की सरकार के द्वारा लाया गया है, क्योंकि लोकतंत्र की संपूर्ण व्यवस्था न्याय की निष्पक्षता और न्याय की सुगमता पर टिकी रहती है। आज जब किसी भी व्यक्ति को अंततः कोई परिणाम चाहता होता है, तो बड़ा फेमस सेंटेंस है जो कहा जाता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी वांट्स टू गो टू कोर्ट। तो बीच का रास्ता क्या है? इफ यू डोंट वांट टू गो टू लिटिगेशन, द आंसर इज मीडिएशन। और आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर होती है तो उस गरीब व्यक्ति को होती है, जिसके लिए समस्या यह होती है कि गांव में कहा जाता है कि कई बार मुकदमा लड़ते लड़ते जमीन जायदाद भी बिक जाती है। न्यायिक व्यवस्था के द्वारा निर्णय आते हैं, निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, परंतु इसमें एक समस्या यह होती है, किसी के हिस्से में दूध आता है, किसी के हिस्से में पानी आता है, फिर उसके मन का पानी जोर मारता है, वो बड़े कोर्ट में जाता है, फिर और बड़े कोर्ट में जाता है, तो समस्याएं टेक्निकल भी चलती रहती हैं, समाधान भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और सबसे ज्यादा इसकी समस्या गरीब व्यक्ति को मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार ने जैसे हर गरीब के हाथ तक विकास की रोशनी पहुंचाई है, हर गरीब के हाथ तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाई है, तो ये बिल एक ऐसी भूमिका बना रहा है जहां न्याय व्यवस्था की सुगमता भी हर गरीब को सहजता के साथ उपलब्ध हो सकती है। जिसे हम कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्तिदा, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, तो करोड़ों लोगों तक यह समाधान पहुंचेगा। दूसरी इसकी व्यवस्था अगर हमें बड़े स्तर पर देखें, आज भारत विश्व की एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। जिस समय बड़े बड़े फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर वो डिस्प्यूट कोर्ट में ही जाएंगे तो उनके समाधान में कई बार टाइम, प्रोसीजर, सारी चीजें बहुत लग जाती है। इसलिए यदि इस बिल में जो व्यवस्था की गई है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन की जो व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि एक मौका देता है कंपनियों को कि वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर सकें कि अगर वो लंबे लिटिगेशन में जाएंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका एक प्रमाण यह है कि 2015 का जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट था, जिसमें 2018 में मीडिएशन को एक प्रकार से इनिशिएट किया गया या काफी आवश्यक किया गया, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने लंबी छलांग मारी। तो मैं कह सकता हूं कि इसके द्वारा जो बिजनेस डिस्प्यूट्स हैं उनको भी संभालने में एक बड़ी हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक और विषय जिसका डॉक्टर अमर पटनायक जी ने भी उल्लेख किया था, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कई ऐसी कंपनियां हो सकती हैं कि जिनके ऊपर कोई दूसरे देश के कानून के साथ भी उनका संबंध हो, और उसमें जब आप लिटिगेशन में जाते हैं या कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं, तो उसमें अगर दूसरे देश
के कानूनों का थोड़ा भी प्रभाव आ गया तो वो बहुत पेचीदा हो सकती है व्यवस्था। तो मुझे लगता है कि इस ढंग की व्यवस्थाओं के लिए तो ये मीडिएशन का लॉ एक वरदान की तरह आएगा कि ऐसी स्थिति में दोनों ही जो प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी ग्रुप हैं वो अपने लाभ हानि को देख कर या तय कर सकते हैं कि इसके बीच में से समाधान कैसे निकलेगा, जिसके लिए इस बिल में व्यवस्था है कि मीडिएशन काउंसिल के लोग उसको तय करेंगे। अगर फॉरेन कंपनी के साथ किसी प्रकार का मीडिएशन होगा और उसके साथ साथ यह भी तय होगा कि उस मीडिएशन की प्रक्रिया के लिए प्रोफेशनल मीडिएटर्स भी आगे बनेंगे, जो आगे जाते जाते धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आएगी कि आने वाले समय में हमारे पास एक सुविचारित सुव्यवस्थित एक मैकेनिज्म बन जाएगा जिसमें कि हर प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मीडिएटर्स होंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन्होंने इस प्रोसेस का सरकार ने सिंप्लीफिकेशन भी किया है, स्टैंडर्डाइजेशन भी किया है और मॉडर्नाइजेशन भी किया है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन प्रोसेस को भी मान्यता दे रहे हैं और कोविड के बाद के दौर में आपने देखा कि ऑनलाइन जिस तेजी से आगे बढ़ा है, तो उससे एक जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें एक और भी अच्छाई है कि सारा डिजिटल रिकॉर्ड आज की डेट में अवेलेबल होता है, तो बहुत सहजता के साथ आप ऑनलाइन मीडिएशन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए मेरा यह विचार है एक तीसरा पक्ष जो इसमें कम्युनिटी और फैमिली यानी तीसरा और चौथा पक्ष होगा। कम्युनिटी के संदर्भ में तो मैं साफ कह सकता हूं कि यदि न्यायिक निर्णय आता है तो किसी एक के लिए स्वागत योग्य होता है और दूसरे के लिए एक को हर्ष और दूसरे को विषाद देता है। सामंजस्य उसके द्वारा नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है मध्यस्थता का भाव दोनों के मध्य कटुता को समाप्त करके एक मधुरता भी ला सकता है यदि मीडिएशन के द्वारा किन्हीं दो समुदायों के बीच में, क्योंकि आजकल सामुदायिक विषय भी बहुत सारे आने लगे, लोग उसके लिए भी कोर्ट जाने लगे, तो मुझे लगता है इसमें यह समाधान ज्यादा बेहतर ढंग से निकले। तीसरा, फैमिली कोर्ट्स के संदर्भ में एक और बात भी कहना चाहता हूं कि आज भारत की अदालतों में लगभग 4.5 करोड़ केस लंबित है, जिसके संदर्भ में आंध्र उच्च न्यायालय के एक जज साहब ने टिप्पणी की थी कि यदि सारे मैटर्स का सॉल्यूशन वर्तमान स्थिति से हो तो 300 साल लगेंगे इन सारे मैटर्स को रिजॉल्व होने में। तो अगर हमें उस चक्र से बाहर निकलना है तो मीडिएशन ही रास्ता है। और जब फैमिली की बात आती है तो मुझे लगता है कि फैमिली के संदर्भ में यदि मीडिएशन की व्यवस्था अच्छे ढंग से लागू हो, कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली कोर्ट में भी आज 12 लाख मामले फैमिली कोर्ट में लंबित है, कई बार होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है कि हमारे कई लोगों को अदरवाइज भी लगे, आज की डेट में हम लोग कई बार वर्ड यूज करते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म, मगर आज एक और चीज आने लगी अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वाभिमान अपनी जगह है, परंतु आज ऐसी परिस्थिति बनने लगी है कि फैमिलीज में भाई भाई, माता पिता, पति पत्नी के बीच में इतने प्रकार के विवाद होने लगे हैं कि अगर वो आगे बढ़े तो इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। आज अमेरिका में 50 साल पहले पर पर्सन पर फैमिली 3.2 था, 2.5 पर्सन पर फैमिली। ये 0.7 कम होने पे उनको 41 लाख नए मकान बनाने पड़े, जिसका इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी पे $8 ट्रिलियन का पड़ा। भारत में 50 साल पहले ये 5.3 था, आज 4.9, तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। परंतु यदि ये 1 पॉइंट से कम हो जाए, यानी 4.9 से 3.9 आ जाए, हमें 6 करोड़ मकान चाहिए। और अगर हम अमेरिका के लेवल पे चले जाएं 2.5 पे, तो हमें 16 करोड़ मकान चाहिए होंगे। यू कैन इमेजिन द इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरगेट अबाउट द इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी और साइकोलॉजी पे एक सोसाइटी क्या होगा, वो तो एक अलग विषय है। इसलिए इस प्रकार के जो प्रोसेस है भविष्य में बहुत सी चुनौतियों से हमें बचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ महाभारत में प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलं त्यजेत, राष्ट्रार्थे ग्रामं त्यजेत, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। तो यानी इसका अर्थ सिर्फ ये है कि अपने परिवार का विषय आए तो कम से कम अपने अहम भाव को पीछे रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं अधिक समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्षी भी आज यहाँ पे नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि वो मीडिएशन के साथ होंगे, क्योंकि जो अभी तक एक दूसरे के खिलाफ कन्फ्रंटेशन करके लड़े पड़े थे, अब एक दूसरे से मीडिएशन करने के लिए गिरे पड़े। तो मुझे लगता है कि वो जरूर इस मीडिएशन के साथ होंगे, परंतु मैं इस मीडिएशन बिल का समर्थन करते हुए एक मामले में मीडिएशन का विरोध भी करता हूं। वो विरोध ये है कि जब कोई ये कहता है विदेश की धरती पर जाकर कि भारत के लोकतंत्र में मीडिएशन होना चाहिए, वहां से मध्यस्थता होनी चाहिए,
ये तो उस मध्यस्थता के हम पूरी तरीके से विरोध हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसके द्वारा मोदी जी ने जो मैंने पहली पंक्ति कही थी उसी की दूसरी पंक्ति के बाद समाप्त करता हूं कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करो घरों तक न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अभी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा, हम कहते थे। और प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा। तो मैं कह सकता हूं आज जन जन के सागर तक वह नीर पहुंचाने का काम न्यायिक व्यवस्था में इसके द्वारा हो रहा है। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। ऑनरेबल श्री जी के भाषण, ऑनरेबल जी के भाषण। Sir, we are a country of 140 crore population, sir. Naturally, sir, disputes, fights, frauds take place because we are a democracy which is praised by the whole world. So, sir, this mediation seems to be a must for us. We are also a signatory of Singapore Convention. Today, we have around 4.5 crores pending cases. This bill is well consulted and incorporated, sir. This bill gives confidence and ease for doing business for all classes. This bill practices institution mediation, community mediation, and online mediation, sir. Guidelines have been given for all the three, especially up to today's technology for the online mediation, sir. Sir, I would kindly like to say approval from the central government should be for making things easier or not making things to delay. Mediation committee should have reputed learned person so that they are able to settle urgent matters within a stipulated time. Likewise, sir, time frame 180 days to 180 days should be considered in a very appropriate way, not for delay. Sir, to cut short and complete my speech, I appreciate this bill, sir, which is the first standalone bill, and I also would like to say violation of guidelines are clear, and this bill will really help crores of people who are waiting in the queue in the pending cases list. With this, I support this bill. Thank you, sir. थैंक यू। अब माननीय मंत्री जी जवाब दें। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से 19 सभी 8 वक्ताओं का एक मिनट माननीय मंत्री जी, आपका नाम ही आया था, सूची में तो नाम नहीं है। एंड यू नो द रूल्स राम, आप 2 मिनट बोल रहे प्लीज, 2 मिनट। धन्यवाद प्रभारी महोदय कि आपने मुझे मेडिसिन बिल बोलने का अवसर दिया। साथ ही में हमारे संक्षेप में माननीय ये अपनी पार्टी के मुख्य आदरणीय बहन को मैं आभार करता हूँ। माननीय इस बिल का मैं स्वागत भी करता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए एक मीडिएशन की व्यवस्था करी है, और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ ध्यान अन्य बातों की तरफ जाना चाहता हूं जो अभी भी घटित हुई है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय 7 जुलाई को मद्रास कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि बाबा साहब की कोई फोटो या स्टेचू तमिलनाडु के अंदर किसी भी कोर्ट में नहीं लगाई जाएगी, जबकि एक नई परंपरा लगाई गई। ऑलरेडी वहां पे लगी हुई थी, और साउथ के अंदर बाबा साहब को मानने वाले लोग बहुत ही, पूरे देश के अंदर बाबा साहब मानने लोग हैं। और बाबा साहब सिर्फ कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं थे, इस देश के अंदर संविधान के निर्माता। तो इसके लिए भी माननीय मंत्री जी से बात कहूंगा कि इस पर भी संज्ञान लाएं और कुछ ना कुछ मीडिएशन की बात इसमें भी करें। और साथ ही पूरे देश के अंदर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय SC/ST एक्ट का वायलेशन होता है। सेक्शन 14 SC/ST एक्ट 2018 ये कहता है कि पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाए जाएंगे। जो SC/ST के जो कानून होते हैं, जो मतलब जो केसेस होते हैं, उनको 2 महीने के अंदर डिस्पोज करना होगा। माननीय इस पर भी कोई खास काम नहीं हो पाया अभी तक, इस पर कोई खास काम नहीं हो पाया। उसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पूरे देश
के अंदर SC/ST लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, ये पूरे देश भी जानता है और पूरा प्रदेश भी जानता है। और हमारे साथ ही मैं 2 घटनाएं बिहार की भी जिक्र करना चाहूंगा, किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। माननीय जी कृष्णैया विषय ये गरीबों का विषय है, इसको भी सुनना चाहिए। माननीय कानून मंत्री जी बैठे हैं, कानून विषय पर बोलिए। तो आपको आपने नाम नहीं दिया था, आपको इजाजत दिया, मैंने दिया, आप देख लें वीडियो में। प्लीज विषय पर बोलिए। विषय मैं बोल रहा हूं माननीय, इसमें भी एक और लास्ट में बात करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जी कृष्णैया के हत्यारे को जेल हुई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उसको भी वहां के जेल के गांव में बदलाव करके छोड़ा गया। माननीय बात तो सुननी चाहिए कि किस जैसे कानून का उल्लंघन होता है। मीडिएशन बिल पर ये चर्चा हो रही है, आप जानते हैं रूल 110 सरकार को आप जानते हैं रूल 110 के तहत आप दूसरे विषय पर करेंगे, चर्चा में नहीं जाएगी। प्लीज माननीय, अगर हम किसी की बातों को रखेंगे, देश के माननीय कानून मंत्री जी बैठे हुए हैं, मीडिएशन पे मैंने बोला है कि हम स्वागत योग्य है। जब बड़े बड़े घरानों के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, इनके लिए भी काम करने की जरूरत है माननीय, है कि नहीं माननीय? इसलिए माननीय मैं एक लास्ट पॉइंट करना चाहता हूँ, उसमें भी मीडिएशन की जरूरत है। अभी सभी लोगों ने अलग अलग ट्रेवल्स को लेकर बात करी, वो भी इस विषय में नहीं आता है, तो मैं उसी को लेकर के बात करना चाहता हूँ। 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट खत्म किया गया माननीय। लास्ट पॉइंट हमारे पास 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ SC/ST एक्ट को लेकर के, उसके बाद तमाम हजारों बच्चों को लगा दिए गए, तमाम सरकार में लगा दिए, कई बच्चों में शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई माननीय। उसमें जो मुकदमे लगाए गए, धन्यवाद। आपसे मेरा कहना है कि मंत्री जी कोई ना कोई मीडिएशन करें, सरकारों को आदेश चाहिए, उनकी भी लाइफ बताई जा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका जवाब। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से सभी 2 माननीय सदस्यों ने कतार में भाग लिया, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे अधिकतर माननीय सदस्यों ने कहा कि भारतीय परंपरा में जो ग्राम पंचायतें थी वो मध्यस्थता का रोल अदा करती थी, इस बात में सच्चाई भी है। और ग्राम पंचायतों में जो मध्यस्थता का भाव था वो लंबे समय तक भारत में रहा, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया वो भाव कम होता गया और हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज्यादा पड़ते गए। और जब मुकदमे होते हैं तो पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और दुश्मनी भी दुगनी हो जाती है। ये भाव भी कुछ माननीय सदस्यों ने प्रकट किए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भारत को विकसित भारत बनाना है, और प्रधानमंत्री जी ने पंच प्राण का भी जिक्र किया था 15 अगस्त को पिछले साल, उसमें भी एक प्राण है या प्रण है भारत को विकसित भारत बनाना, मानव केंद्रित। तो मानव की संवेदनाएं कैसे बढ़े, वो क्यों झगड़ता है, उसमें कैसे कमी करें, ये इसमें भाव छिपा हुआ है। गुलामी की मानसिकता के अंशों का अंत करना, ये भी एक भाव है। विरासत पर गर्व, माननीय सदस्य ने कहा कि विरासत पर गर्व करना चाहिए, ये भी एक भाव है। एकता और एकजुटता और कर्तव्य भाव को बढ़ाना, ये पंच प्रण है। इसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि ब्रिटिश काल में जो मुकदमेबाजी का दौर ज्यादा शुरू हुआ, उसके बाद समय समय पर देश आजाद हुआ तो ये विषय आया कि मीडिएशन काम गायब हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले जिनका जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने MR कृष्णामूर्ति बना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कहा, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम बनाने की सख्त जरूरत है। देयर इज नीड टू बी एक्ट ऑफ मीडिएशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा MR कृष्णामूर्ति बना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केस में। उसके बाद एक और केस महत्वपूर्ण हुआ, जो केस श्रीनिवासन राव बना ये दीपा। इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैट्रिमोनियल विवाद है उनमें 10-15% मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से निपटारा होता है। कोर्ट ने कहा कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन का विचार जोर पकड़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में कई वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाता है। मुकदमे पूर्व मध्यस्थता में इन केंद्रों
की सफलता दर अच्छी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया और सुझाव दिया कि यदि सभी मध्यस्थता केंद्र प्री लिटिगेशन डेस्क क्लिनिक स्थापित करें और पर्याप्त प्रचार प्रसार करके विवाहित विवादों का निपटारा किया जाए तो मुकदमे पूर्व निपटारे से कई परिवार कठिनाइयों से बच सकते हैं, जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे कि हमारी फैमिली में भी विवाद हो रहे हैं। इसका जिक्र भी के श्रीनिवास राव बनाम डी दीपा के केस में माने सुप्रीम कोर्ट ने किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी मानी, इसका नाम था मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, एमसीपीसी जिसको हम कहते हैं। इसने भी अगस्त 2020 को भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि मीडिएशन के क्षेत्र में काम होना चाहिए। मैं ये इसकी इसलिए बता रहा हूं कि ये क्यों बहुत पहले से भी काम चल रहा था, लेकिन तेजी तब पकड़ी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने उस पर गंभीरता से सोचा, क्योंकि हमारी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो टुकड़ों में नहीं सोचती है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होती है और पूरे समग्र विषय को एक साथ लेकर के और इस एक्ट को लाने का प्रयास जो किया वो बहुत सराहनीय प्रयास मैं मानता हूं। फिर अगस्त 2021 को ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, इसी उच्च सदन में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर राज्यसभा जब इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत से सदस्यों ने डिमांड की कि इसको कमेटी में जाना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस। इस कमेटी को ये गया जिसके अध्यक्ष सुशील मोदी जी हैं, माननीय भूपेंद्र जी भी उस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, करीब 52 सजेशन इस कमेटी ने दिए। हमने इन सुझावों को करीब 25 सुझावों को हमने माना है। अब 27 ऐसे सुझाव हैं जो बाद में इस पे चर्चा करते समय हो सकता है इसको रूल बनाते समय इस पे विचार करें, लेकिन कमेटी के अधिकांश अच्छे सुझावों को हमने बिल में माना है। मैं एक और निवेदन आपको करना चाहता हूं कि हम ऐसा नहीं है कि मीडिएशन हम कर नहीं रहे थे। सीपीसी का जो सेक्शन 89 है उसके तहत ये काम होते थे, मीडिएशन सेंटर कोर्ट में बने हुए थे, लेकिन इसमें तेजी नहीं थी और एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं होने से इसका कोई लीगल आधार नहीं था। इसलिए लोग कहते थे मीडिएशन करें क्या फायदा, कोई मानेगा नहीं मानेगा। इसलिए इसकी मीडिएशन एक्ट की जरूरत थी, जो मैं लेकर के आपके मध्य आया हूं। बहुत से ऐसे विवाद जिसका राकेश सिन्हा जी जिक्र कर रहे थे कि हमने मीडिएशन के माध्यम से सुलझाए, जैसे असम नागालैंड सीमा विवाद है, अयोध्या बाबरी मस्जिद का विवाद का जिक्र उन्होंने किया, इसमें भी मीडिएशन का अपना एक रोल रहा है। मैं एक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कह सकता हूं कि अप्रैल 21 से मार्च 22 की अवधि के दौरान भारत में मध्यस्थता के माध्यम से कुल 52,968 मामले निपटाए गए। अब ये संख्या कम है भारत के जैसे बड़े देश को देखते हुए, इसलिए हम इसमें तेजी लाना चाहते हैं। इसलिए ये एक ऐसा मैकेनिज्म भी है कि हम जो लंबित मामले हैं उनको कम कर सकते हैं। ये विषय कई सदस्यों ने रखा कि भारत में डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में करीब 4 करोड़ 43 लाख मामले पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में 60 लाख 63 हजार मामले पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी 69,766 करीब 70,000 के मामले पेंडिंग है। तो ये 5 करोड़ से ऊपर संख्या हो जाती है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, तो इसको हम कैसे कम करें पेंडिंग मामलों को? तो इसके लिए हमने कई जो प्रयोग किया, उसमें एक एडीआर भी एक प्रयोग है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसी में ये मीडिएशन आता है। अदरवाइज तो राष्ट्रीय लोक अदालतें भी आपने देखी है, उसमें भी हम मामले निपटाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हमने ई कोर्ट के माध्यम से भी जल्दी मामले निपटाने शुरू किए हैं। अभी जो ट्रैफिक के मामले हैं वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से, अदरवाइज पहले कोर्ट में ये पुलिस केस दर्ज करती थी, कोर्ट में जाता था, समय लगता था। हम सेम डे निपटा रहे हैं, तेजी तो ला रहे हैं, फिर भी ये मीडिएशन के माध्यम से मुझे लगता है कि इसमें बहुत सुधार आएगा। अब जो मीडिएशन जो बिल हम लेकर के आए हैं, इसमें जो खास बातें हैं उनका थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहता हूं। यह एक लचीली और अनौपचारिक प्रक्रिया है, जो फ्लेक्सिबल
और ये वॉलंटरी भी हमने रखा है। ये हमारे जो सबसे पहले वक्ता हमारे अमर पटनायक जी बोल रहे थे कि ये मैंडेटरी, पहले जो बिल हम लेके आए थे इसमें मैंडेटरी किया था, लेकिन कमेटी भी कई बार बहुत अच्छे सुझाव देती है। कमेटी ने ऐसा नहीं है कि यहाँ जो स्टेक होल्डर है उनसे ही पूछा, विजिट भी किया और अलग अलग जो स्टेक होल्डर है उनके ग्रुप से मिली, तो कमेटी ने सुझाव दिया कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटरी होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको वॉलंटरी लेकर के हम आ रहे हैं। कानूनी पूर्वाग्रह के बिना मध्यस्थता हटने की स्वतंत्रता, ये भी इसमें है, इस एक्ट में हम लेकर के आ रहे हैं। बातचीत से सीधा जुड़ाव, ये भी एक प्रक्रिया है। मध्यस्थ एक तटस्थी पक्ष, न्यूट्रल थर्ड पार्टी, इसमें हम मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग का भाव भी ला रहे हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, कम लागत वाला भी एक माध्यम है और ये इस विधेयक के माध्यम को हम समयबद्ध प्रक्रिया बनाता है, जिससे पार्टियों के लिए समय और धन की बचत होगी। जैसे पहले मैंने कहा कि जब मुकदमा होता है तो पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और दुश्मनी भी दुगनी हो जाती है। इन सब चीजों को हम ठीक करने के लिए बिल लेकर के आ रहे हैं। विवाद समाधान कार्रवाई के दौरान उसके बाद पार्टियों द्वारा अपने रिश्ते को जारी रखने के लिए संभावना भी बढ़ जाती है, ये भी इसका एक भाव है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, ये हम बनाए रखी जाती है, इसमें बनाए रखेंगे। ये ऑनलाइन मध्यस्थता वाला विषय भी बहुत से सदस्यों ने कहा को विवाद समाधान के लिए स्वीकार्य तरीके से रूप में मान्यता देता है, जिससे पार्टियों की दूरी की बाधा भी दूर हो जाएगी। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये भारत ने 7 अगस्त 2019 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। इसे मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन कहते हैं। बहुत से सदस्यों ने सिंगापुर कन्वेंशन की बात की। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में अभी केवल 11 देशों ने ही सिंगापुर कन्वेंशन को रेटिफाई किया है और अभी सिंगापुर कन्वेंशन को सभी सिंगापुर कन्वेंशन ये जो सिग्नेटरी हैं कंट्रीज द्वारा आत्मसात नहीं किया गया। हमने लीड ली है और जो जिन्होंने किया है वो छोटे इकोनॉमी वाले देश हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें लीड लिया है। मैं इसमें ये आपको कहना चाहता हूं। मैं एक पुरातन ज्ञान की परंपरा का जिक्र भी कई बार यहाँ आया और अभी मैं जब यहाँ चर्चा के लिए खड़ा हूं तो मैं सदन में चर्चा होते हुए सुन रहा था, पीछे से माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण पहले मीडिएटर थे। ये चर्चा यहाँ हो रही थी, है? मैंने बराबर सुनी या नहीं सुनी? मेरे कान ठीक है इसका है? पहले घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं पहला अंगद था, लेकिन भगवान कृष्ण, इसका मतलब मीडिएटर की परंपरा हमारे यहाँ रही है। कोई माना नहीं माना वो अलग बात है, लेकिन मीडिएटर तो रहा है। लेकिन इसको हम कानूनी पक्ष से मजबूत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना रहे हैं, रेगुलेशन दे रहे हैं। इसलिए जो भी दोनों पक्ष मिलकर के जब इस मध्यस्थता के भाव को और से एक समझौते पर आएंगे तो मुझे लगता है कि लंबित मामलों में भी कमी आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, यही समय है और सही समय है, भारत का अनमोल समय है, आजादी का अमृत महोत्सव है। अमृत काल में जो बिल पास होगा वो भारत के लिए भी अमृत सिद्ध होगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। The question is that the mediation bill 2021 be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 4 amendments. Number 97 by Dr. John Brittas. Dr. John Brittas absent. Number 3 to 5 by Sri Arjuna Meghwal ji. Amendments moved. I shall now put the amendments moved by Honorable Sri Arjun Ram Meghwal ji to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted.
I shall now put clause 2 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 as amended is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 6 to 12 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 3 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 as amended is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment. Number 13 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 4 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 as amended is adopted. Clause 5 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 14 to 20 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 6 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 as amended is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There is one amendment. Number 21 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 7 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 as amended is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There is one amendment. Number 22 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 8 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 as amended is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 23 and 24 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 9 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 as amended is adopted. Clauses 10 to 12 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 10 to 12 are adopted. Clause 13 stands part of the bill. There is one amendment. Number 25 by Sri Arjun Ram Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 13 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 13 as amended is adopted. Clauses 14 and 15 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 14 and 15 are adopted. Clause 16
stand part of the bill, there are 5 amendments. Number 26 to 30 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 16 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 as amended is adopted. Clause 17 stand part of the bill. There is one amendment, number 31 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 17 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 17 as amended is adopted. Clause 18 stand part of the bill. There are 3 amendments. Number 32 to 34 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 18 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 18 as amended is adopted. Clause 19 stands part of the bill. There are 3 amendments, number 35 to 37 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 19 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 19 as amended is adopted. Clause 20 stands part of the bill. There is one amendment, number 38 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 20 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 20 as amended is adopted. Clause 21 stands part of the bill. There are 2 amendments, number 39 to 40 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 21 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 21 as amended is adopted. Clause 22 stands part of the bill. There are 2 amendments, number 41 and 42 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 22 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 22 as amended is adopted. Insertion of new clauses 22A and 22B. There is one amendment for insertion of new clauses 22A and 22B. Number 43 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the new clauses 22A and 22B to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. New clauses 22A and 22B are adopted. Clause 23 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 44 to 46 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 23 as amended to vote. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 23 as amended is adopted. Clause 24 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 24 is adopted. Clause 25 stands part of the bill. There are two amendments, number 47 to 48 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 25 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 25 as amended is adopted. Clause 26 stands part of the bill. There is one amendment, number 49 by Sri Arjuna Meghwalji. I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 26 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 26 as amended is adopted. Clauses 27 and 28 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 27 and 28 are adopted. Clause 29 stands part of the bill. There are two amendments. Number 98 by Dr. John Brittas. Dr. John Brittas absent. Number 50 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. I shall now put the amendment moved by Sri Arjuna Meghwalji to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 29 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 29 as amended is adopted. Clause 30 stands part of the bill. There is one amendment, number 51 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 30 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 30 as amended is adopted. Clause 31 stands part of the bill. There are three amendments. Number 52 to 54 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 31 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 31 as amended is adopted. Clauses 32 and 33 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 32 and 33 are adopted. Clause 34 stands part of the bill. There are 13 amendments. There are 13 amendments. Number 99 to 101 by Dr. John Brittas. Member absent. Dr. John Brittas absent. Number 105 and 106 by Dr. V. Siudasan. Member absent. Number 55 to 59 and 102 to 104 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. I shall now put the amendments moved by Sri Arjuna Meghwal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 34 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 34 as amended is adopted. Clause 35 stands part of the bill. There is one amendment, number 60 by Sri Arjuna Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the amendment is adopted. I shall now put clause 35 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 35 as amended is adopted. Clause 36 stands part of the bill. There are two amendments, number 61 and 62 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 36 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 36 as amended is adopted. Clause 37 stands part of the bill. There are four amendments, number 63 to 66 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 37 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 37 as amended is adopted. Clause 38 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 38 is adopted. Clause 39 stands part of the bill. There is one amendment, number 67 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 39 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 39 as amended is adopted. Clause 40 stands part of the bill. There is one amendment, number 68 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 40 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 40 as amended is adopted. Insertion of new clause 40A. There is one amendment for insertion of new clause 40A, number 69 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put new clause 40A to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. New clause 40A is adopted. Clause 41 stands part of the bill. There is one amendment, number 70 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 41 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 41 as amended is adopted. Clauses 42 and 43 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 42 and 43 are adopted. Clause 44 stands part of the bill. There are 6 amendments. Number 107 by Dr. V. Sudasan, absent. Member absent. Number 71 to 75 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendments moved. I shall now put the amendments moved by Sri Arjun Ram Meghwal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 44 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 44 as amended is adopted.
Clause 45 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 76 to 82 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 45 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 45 as amended is adopted. Please, Shanti rakhe, please. Clause 46 stands part of the bill. There is one amendment, number 83 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 46 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 46 as amended is adopted. Clause 47 to 48 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 47 and 48 are adopted. Clause 49 stands part of the bill. There is one amendment, number 84 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 49 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 49 as amended is adopted. Clause 50 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 50 is adopted. Clause 51 stands part of the bill. There is one amendment, number 85 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 51 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 51 as amended is adopted. Clause 52 stands part of the bill. There is one amendment, number 86 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 52 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 52 as amended is adopted. Clause 53 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 87 to 91 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 53 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 53 as amended is adopted. Clause 54 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 54 is adopted. Clause 55 stands part of the bill. There is one amendment, number 92 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 55 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 55 as amended is adopted. Clauses 55 and 57 stand part of the bill. Those in favor will, clauses 56 and 57 stand part of the bill. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 56 and 57 are adopted. Insertion of new clause 57A. There is one amendment for insertion of a new clause 57A, number 93 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put new clause 57A to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The new clause 57A is adopted. Clauses 58 to 65 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 58 to 65 are adopted. माननीय सदस्यगण 6 बज चुके हैं. आज और 2 बिजनेस है और यह बिल पास हो रहा है. पूरा बिजनेस खत्म होने तक सदन बैठ रहा है. यह आम सहमति है, मानकर चलें. Deputy Chairman, sir, I would like to propose that this bill we are in the process of adopting it or discussing the final stages. We will conclude this, and after that we will take up one more bill. Thank you. The first schedule stands part of the bill. There is one amendment, number 94 by Sri Arjun Ram Meghwal. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the first schedule as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The first schedule as amended is adopted. The second schedule and third schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The second schedule and third schedule are adopted. The fourth schedule stands part of the bill. There is one amendment, number 95 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put fourth schedule as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The fourth schedule as amended is adopted. The fifth schedule to eighth schedule, the fifth schedule to eighth schedule stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The fifth schedule to eighth schedule are adopted. The ninth schedule stands part of the bill. There is one amendment, number 96 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the ninth schedule as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The ninth schedule as amended is adopted. The 10th schedule stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The 10th schedule is adopted. Clause 1 stands part of the bill. There is one amendment, number 2 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 1 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1 as amended is adopted. The enacting formula stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the enacting formula as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The enacting formula as amended is adopted.
The title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The title is adopted. Sri Arjun Ram Meghwal to move that the bill as amended be passed. Sir, I move that the bill as amended be passed. Motion moved that the bill, motion moved, please. Motion moved that the bill as amended be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended is passed. माननीय सदस्यगण, please, माननीय सदस्यगण, the new bill, the Biological Diversity Amendment Bill 2023. माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी to move a motion for consideration of the Biological Diversity Amendment Bill 2023. Sir, I move that the bill further to amend the Biological Diversity Act 2002 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. कुछ बोलना चाहेंगे माननीय मंत्री? Thank you. श्रीमती सुलता देव, श्रीमती सुलता देव, please. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 में बोलने के लिए मौका दिया। मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ। जैव विविधता की जब बात आती है तो मैं पहले मेरे उड़ीसा के बारे में बोलूँगी। भारत माँ और पृथ्वी माँ ने हमारे उड़ीसा को इतने अच्छे से दिया है, जो फ्लोरा और फौना है इतने अच्छे तरीके से नवाजा है, शायद ही किसी और स्टेट में देखने को मिलेगा। हमारे उड़ीसा में 37% फॉरेस्ट है। राज्य की जो भौगोलिक सीमा है उसमें से 37% है। उड़ीसा सेकेंड लार्जेस्ट नॉन टिम्बर प्रोडक्टिंग स्टेट है। 37 पॉपुलेशन जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि लीफ हो, सीड्स हो, फ्रूट्स हो, मशरूम्स हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो। रूरल एरिया में देखा जाए तो 40% इनकम जो जंगल जात फॉरेस्ट में से जो निकलता है उसी में से वो लोग अपना घर बार चलाते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सुरक्षा देने के लिए उड़ीसा में सरकार के द्वारा 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक नेशनल पार्क, एक प्रपोजल नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर पार्क रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व और 3 एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। प्राकृतिक सुरक्षा कवच के हिसाब से हमारे पास मैनग्रोव फॉरेस्ट है, सी वीड्स है, सी ग्रासेस है और काजू प्लांटेशन है जो हमको नेचुरल कैलामिटी से बचाता है। हमारे पास देखा जाए तो रेयर प्रजाति के हर्ससु क्रैब है, उड़ीसा कोस्ट में दिखाई देता है। इराविड डॉल्फिन है, चिलिका में दिखाई देता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो भितरकनिका में दिखाई देता है। मगर और घड़ियाल ये दोनों टिकरपड़ा में दिखाई देते हैं। चिलिका लागून जो एशिया का सबसे बड़ा ब्राकिस लेक है वो उड़ीसा में दिखाई देता है। रामसर साइट जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है वो उड़ीसा में है। अगर देखा जाए तो उड़ीसा में डाइवर्सिटी के लिए हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी देखेंगे तो कंधमाल में बहुत सारी प्रजाति की हल्दी है जिसको जीआई टैग का मान्यता मिला गया है। मिलेट जो है वो कोरापुट में है। अगर देखा जाए गजपति जिला को, वहां पर मक्का उत्पादन किया जाता है जिनका स्वतंत्र परिचय नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में है। उड़ीसा में 15,000 प्रजाति का ट्रेडिशनल राइस होता है, जबकि 50,000 केवल सारे भारतवर्ष में से जो पाया जाता है उसमें से 15,000 हमारे पास होता है। अगर देखा जाए जो ये प्रजाति को संरक्षण करने के लिए हमारे वहाँ के जो एक कमला जी है जिनको यहाँ पद्मश्री का उपाधि मिला था कि वो सबसे अच्छे सीड्स जो पैडी होते हैं वो उनको संभाल के रख पाते हैं। हम अगर देखा जाए हमारे जो ये जो बिल आया है
जिसको नगोया प्रोटोकॉल के हिसाब से भी देखा जा रहा है। अगर देखा जाए जो नगोया प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ये बिल तो 2002 में हुआ था, मगर इसको जब 2022 में इसको अमेंडमेंट के लिए दिया गया। मैं तो सरकार को भी शुक्रिया गुजार करूंगी, क्योंकि वहां जब बिल आया तो उसमें बहुत सारे लाकुनास थे, जिसके वजह से किसी स्टेट में भी प्रॉब्लम होता था। अगर देखा जाए स्टेक होल्डर्स को भी प्रॉब्लम होता था, देखा जाए रिसर्चरों की भी प्रॉब्लम होता था। मगर अगर देखा जाए तो इसमें ये बिल में इसको लेकर अमेंडमेंट होने जा रहा है, जिसके लिए ये बिल सभी लोगों के लिए सहज हो पाएगा, सरल हो पाएगा। जो लोग जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिसर्च करते हैं, जैसे देखा जाए तो भारत एक आयुर्वेद के हिसाब से जो मेडिसिनल प्लांट्स है, ये भारत में बहुत सारे हैं। अगर देखा जाए तो भारत के मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उसको लेकर हम लोग जो रिसर्च करते हैं, पहले प्रॉब्लम होता था, अभी ये बिल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेडिसिनल वैल्यू होता है आयुर्वेदिक में, इसे किस तरह से किया जाएगा, किसे रिसर्च किया जाएगा, इसके ऊपर बहुत गुरुत्व दिया गया है। और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का, जो हमारे पास में जितने सारे पेड़ पौधे हैं 5000 से भी ज्यादा है, उससे अगर देखा जाए तो 500 हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक ऐसा बनाया गया है जो कंजर्वेशन करके मेडिसिनल प्लांट्स को रखा जाए। 8 ऐसा कंजर्वेशन एरिया बना गया है, शायद और कहीं है। ये बिल जो आ रहा है, हम जरूर चाहेंगे जो नगोया प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे जो चीज है उसमें होना चाहिए। और अगर देखा जाए ये प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लोग जो जनबसती में ये सब चीजें होती है, उन लोगों की वो जनबसती को इसका फायदा भी मिलना चाहिए। और एक छोटी सी बात करके मैं अपना रखूंगी ये, क्योंकि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये हमारे पीढ़ियों के लिए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको संभाल के रखना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी को बहुत खतरा होता है अगर देखा जाए पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह से। काइंडली यहाँ पर मंत्री महोदय है, आप भी है, मैं गुजारिश करूंगी कि जो बायोडाइवर्सिटी बिल आया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल आया है, उसमें अगर देखा जाए तो जहां जड़ है जो प्लास्टिक का, उसको कैसे बंद किया जाए। हमारे ओडिया में एक कहावत है, मुळु मारिले जीव सरी देव को संगे किंपा कड़ी। जे अगर हम लोग जड़ तक पहुंच जाए तो ये खत्म हो जाएगा। हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो ये प्लानेट है, ये बच जाएगा। नमस्कार सबको, मेरा थैंक यू। बंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। सुलता जी, बहुत धन्यवाद। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। Thank you, sir, for giving me the opportunity. I'll be brief. Since We have to be brief. I will request all the speakers to be yes. brief. So, this bill was this bill is our commitment, India's commitment to the Convention on Biological Diversity of 1992. On the basis of this, the CBD recognizes countries to have the right to control their biological resources. So that keeping that in view, this National Biodiversity Bill was brought, and with the objectives like national in 3-tier. The Act establishes a 3-tier structure: National Biodiversity Authority, State Biodiversity Authority, and Biodiversity Management Committees. This Act of 1992 provides for sharing of benefits with conservers of biodiversity and holders of creators of associated knowledge. Benefits may be shared in various forms, such as monetary compensation, sharing of intellectual property rights, and technology transfer. So the present bill, the Biological Diversity Amendment Bill 2021, has the highlights and objectives to encourage the Indian system of medicine and cultivation of wild medicinal plants. Sir, we are known for our the Indian system of
medicine. And before the allopathic or any other form of medicines, this was the only answer to for treatment of people in general, and it was accepted in a large scale. The second thing is to decriminalize the offenses, and the third, to encourage foreign investment in this sector, and to facilitate fast tracking of processes for research, patent application, and transfer of research results. So the key highlights that I want to place before you and the House is to access to biological resources and associated knowledge. This act requires prior approval for or intimation to the regulatory authorities, that is National Biodiversity Authority and State Biodiversity Authority, based on the origin of the entity for obtaining biological resources occurring in India or associated knowledge. And number two, the exemption to Ayush practitioners. It seeks to exempt the Ayush practitioners and people accessing codified traditional knowledge, among others, from giving prior intimation to state biodiversity boards for accessing biological resources. There are many other important issues in this bill which should have, I think some other speakers will also mention about it, but I have some concerns in this bill, sir. So I will only deal with my concerns in this bill. Number one is lack of clear legislative guidance for determining the penalty, because the bill has spoken about the legislative guidance for the penalty. An adjudicating officer of the joint secretary rank of central government or secretary rank of the state government will determine the penalty. That is where I have some of my concerns, which Honorable Minister, while replying, he will touch upon this. I will only highlight this, that the range of penalties is extensive, ranging from 1 lakh rupees to 1 crore rupees, with no specific instructions for the adjudicating officer on how to decide within this range. The bill does not differentiate penalties based on the type of offense. I appreciate the bill, I support the bill, but I request the Honorable Minister to throw some more light on this. And the second point that I want to highlight here about, and which is my concern, is this bill replaces a judge as the adjudicating authority with a government official. A government will replace the judge. A government official will replace the judge. And the penalty decisions will be based on an inquiry rather than a judgment after open court arguments. The concern is whether giving such discretion to a government official is appropriate. That is my concern, sir. I understand, I support this bill, and I hope the minister will throw more light on these issues. Thank you very much, sir. Thank you, Mani Bhuneswar Kelta ji. Honorable Ajodhya Rami Reddy ji. Namaskar, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on the Biological Diversity Amendment Bill 2021. Sir, the objective of this bill is to seek to amend the Biological Diversity Act 2002 in order to fulfill Indian obligations under the Convention of Biological Diversity and Nagoya Protocol. The key features of this bill are: it reduces the pressure on wild medicinal plants by encouraging the cultivation of medicinal plants. It exempts Ayush practitioners from intimating biodiversity boards for accessing biological resources. It facilitates fast tracking of research. It aims to bring more foreign investments. It seeks to regulate who can access biological resources. The bill has also clarified and strengthened the role of state
biodiversity boards. It has changed certain criminal offenses related to these violations on access to biological resources and benefit sharing with the community. So these are all very good features, sir. And some of the positives also of this act. The earlier act imposed a heavy compliance burden and made it hard to conduct collaborative research and investments. This bill addressed these problems. The amendments provided for access and the benefit sharing of traditional knowledge to Ayush practitioners is addressed in this bill. This would help in promoting further research in this sector. The bill also amends the Act to include references to the Nagoya Protocol regarding the access and benefit sharing. Thus, I congratulate the government on taking us further in our commitment to the growth of biodiversity through this bill. Sir, I have few problems, which this bill need to be looked into. One of the issue is the bill amends the previous act to required to be taken. The approvals for benefit sharing should be in accordance with mutually agreed terms between the applicant and the concerned biodiversity management committee represented by NBA. So actually, ideally, this process should include the applicant, concerned local bodies, and benefit claimers. So I want the minister to take note of this and look into it. Also on the penalties, the bill decriminalizes offenses as per the initial act and replaces them with penalties. It raises the question of whether such power should be given to the government officials instead of judiciary. That's another issue. Then the negative impact on Indian industry also need to be looked into because it has to control the exploitation of Indian bioresources by foreigners. There are concerns regarding proposed exemptions. The modifications made under the bill exempt Ayush manufacturing companies from getting the approvals from NBA. So a joint parliamentary committee constituted to analyze the bill raised in the matter for proposed exemptions, opening the law for abuse. So it was unclear if companies had even paid communities despite commitments. Thus, the role of NBA should be clearly stated to prevent such incidents. With climate change escalations endangering our biodiversity, I would like to emphasize that we need a cohesive and coordinated approach between the international obligation as part of CBD and all related union ministries to effectively protect and promote our biodiversity and its benefit. In this regard, I urge the Centre to address these problems, and with these suggestions, I support the bill. Thank you, sir. Thank you. Honorable G.K. Vasan. Honorable G.K. Vasan. Stand here on behalf of the party to support this bill, sir. The new bill is expected to shift its focus from the conservation and sustainable use of biodiversity to improving the use, access, and sharing of bioresources, sir. The significance of this bill, sir, I would say, is expected to minimize the pressure on wild medicinal plants by promoting medicinal plant cultivation or ex situ conservation of medicinal plants, sir. I would like to thank the Honorable Minister, sir, for exempting local people and communities of the area, Whites, Hakims, and registered Ayush practitioners from obtaining approval for accessing biological resources and their associated knowledge. This enables individuals who practice traditional Indian medicine to continue their operation without having to seek permission from the National Biodiversity Authority. Further, sir, this will be expanding the scope and research of the Ayush, which is Ayurveda, Yoga, and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy centers, sir. Sir, the new bill expanded the administrative purview of NBA by adding ex officio members from various central government ministries. This is a remarkable development since this collaboration integrates biodiversity into national policy making, sir. To conclude, sir,
I want to say a concern to the Honorable Minister. The main issue with the amendment bill is that corporate or international interest might exploit traditional medicine permits to utilize it for commercial reasons without sharing gains with biodiversity conservationists. I request our Honorable Minister to take care of the interest of our biodiversity conservationists. With this, I support the bill. Thank you, sir. Thank you, Honorable G.K. Vasan ji. Mani Ram ji. धन्यवाद मानवर कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया और साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुखिया बहन जी को भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। मानवर बिल के बारे में मेरा ये कहना है, मानवर जब दुनिया के तमाम देश अपने अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए आगे आए तो रियो समिट में CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हमने साइन किया 1992 में और उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2002 में अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये बिल लेकर के आए और उसमें तमाम तरह के प्रावधान किए गए कि किस तरह से हमें बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल यूज किया जाए। इनका पूरी तरह से दोहन नहीं होना चाहिए कि इन द फ्यूचर हमारे पास कोई भी इस तरह की बात बचे ही ना कि हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएं। उसको लेकर के बिल लेकर के आए और उसमें तमाम तरह के प्रावधान भी थे कि इसमें रिसर्च भी की जाएगी और इनका कमर्शियल यूज भी किया जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड स्तर तक कि हमें कोई भी हमारा जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। उसको लेकर के एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी बनाई गई जो हर चीज को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई हुई थी। तो मान्यवर उन सब बातों को ध्यान में रख करके 2002 का बिल आया और उसके बाद अब माननीय मंत्री जी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लेकर के आए हैं। उन्हीं कुछ बातों में अमेंडमेंट करने के लिए जिसमें कुछ बातें थी डाउटफुल आती हैं कि पिछले वाले बिल में क्या कमियां थी और इस बिल से क्या फायदा होने वाला। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हम इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को देखें तो उस 1988 की पॉलिसी वो कहती है कि 33% जियोग्राफिकल एरिया में हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में हम जब बायोलॉजिकल रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो उस पर ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना फॉरेस्ट है। आज की सिचुएशन ये है कि हमारे पास 21% जियोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट है, अगर सारी चीज को मिला लें 24% है, तो इसके मतलब है हमारे पास बहुत बड़ी बहुतायत में हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेस नहीं है। तो अगर हम इसमें कई सारी चीजों का प्रोविजन जो पहले था उनमें ढील देंगे तो इसके मतलब है कहीं ना कहीं से कमर्शियल यूज बहुत तेजी से होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी, उनका कहीं से मतलब नहीं होगा कि हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या हमारे इन द फ्यूचर हमारे इकोसिस्टम में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हो सकता है कि वो लोग बहुत तेजी से उसका दोहन करें और हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को खत्म कर दें, क्योंकि उस सारे प्रावधान में एक क्रिमिनल का भी उसमें प्रावधान किया गया था। कोई भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा दोहन करेगा, अगर लिमिट के आगे जाके करेगा तो उसमें क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। शायद इसमें अभी वो वर्ड हटा दिया गया है, क्रिमिनल नहीं होगा, उस पर पेनाल्टी कर दी जाएगी। इस तरह से कुछ सुनने को मिला, पढ़ने को मिला मान्यवर। तो भी तमाम और इसके साथ ही मान्यवर उस वाले बिल में यह भी था कि जो लोकल जो कम्युनिटीज थी जो इस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रही थी उनको भी रिवार्ड मिलेगा। माने कि इसमें तमाम तरह के ट्राइबल हमारे भाई जो लोग हैं वो लोग जंगलों में रहते हैं, उसकी रिसोर्स अपने जो उसको रक्षा करते हैं, तो उनको भी उनको उसका फायदा मिलेगा, रिसोर्सेज का फायदा मिलेगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर भी एक संशय बना हुआ कि ये क्या अभी जो कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी, फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब क्या वो वहां उनको लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। इस चीज को लेकर के भी एक डाउट मन में पैदा होता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि इन प्रोविजनों पर भी ध्यान दें कि इनका बहुत ज्यादा स्तर पर दोहन ना होने पाए, कल को हमारे पास कुछ बचेगी कि बायोलॉजिकल रिसोर्स के नाम पे सिर्फ बिल रह जाए और बायोलॉजिकल रिसोर्स खत्म हो जाए, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद माननीय राम जी। माननीय ब्रिजलाल जी, माननीय ब्रिजलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी डिटेल में बताया है, ऑब्जेक्टिव बताया है। मैं ये कहना चाहता हूं हमारा देश 3 किस्म के क्लाइमेट में डिवाइडेड है। एक है जो 5000 to 7000 फीट में आता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन, और उसके बाद सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन है।
सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन में 70% हमारी मेडिसिनल प्लांट इसी क्षेत्र में होते हैं और 30% हैं वो टेम्परेट जोन में होते हैं, जिसमें हमारा पूरा हिमालयन रीजन है। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं उसका बहुत दोहन हुआ है, अनरिस्ट्रिक्टेड हुआ है और जगहों पर हुआ है। तो ये जो बिल आया है इससे काफ़ी मदद मिलेगी और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें हम कल्टीवेट करेंगे, हम वाइल्ड उस पर वनस्पतियाँ उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारी एक संस्था है CSIR के अंडर में काम करती है, उसका नाम है सीमैप। सीमैप जो है उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और उसके ब्रांचेज बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, उत्तराखंड में है और लखनऊ में अक्सर जाता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। तो ये काफ़ी जड़ी बूटियाँ सर्च करते हैं, किसानों को बुलाकर ट्रेनिंग देते हैं और किसान जाकर वहाँ ये जड़ी बूटियाँ पैदा करते हैं। तो इस तरह ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ मंत्री जी को सीमैप जो है इसको और प्रोत्साहन दिया जाए और जिससे हमारे किसान ये लोग जड़ी बूटियाँ ये पैदा करें। हिमालय की जड़ी बूटी महोदय कहना चाहता हूँ, एक जड़ी बूटी जो सबसे महंगी है, गोल्ड से भी महंगी है, दैट इज कॉल्ड कीड़ा जड़ी। वो आधा कीड़ा होता है, आधा फंगस होता है और वो बड़ी ऊंचाई पर मिलता है। और इवन कीड़ा जड़ी का प्रोडक्शन पतंजलि ने शुरू किया और झांसी जैसी गर्म जगह पर हमारे प्रदेश में हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक एयर कंडीशन बना करके और क्लाइमेट वो क्रिएट करके कीड़ा जड़ी वहाँ पैदा किया, वो सक्सेसफुल रहा। तो ये जो हमारा प्रयास है इसमें, इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए किसानों को। और वो जो है तमाम हमारी जड़ी बूटियां जो हम वाइल्ड पर डिपेंड करते हैं वो जो है जिससे वो हम पैदा करें। और ये जब हमारी जड़ी बूटियां होंगी तो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, सिद्धा मेडिसिन है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, इन तमाम जो हमारी पद्धतियां हैं तभी इसको बढ़ावा मिलेगा और ये मेडिसिन इलाज भी सस्ता होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस तो हमारे बुजुर्ग लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी करते रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बिल आया, इसमें तमाम ये प्रोविजन है, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको बहुत जानकारी है। और ये जो जड़ी बूटियां पैदा हों हमें मार्केटिंग की व्यवस्था है, हमारी सरकार ये पक्का व्यवस्था करेगी। क्योंकि हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर चलते हैं कि जो अंतिम सीढ़ी पर है उसका फायदा हो, आदिवासी है। तो ये जो जड़ी बूटियां लोग किसान पैदा करें, हमारी सरकार ये जरूर व्यवस्था करेगी कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, वो उनमें उत्साह आए और जड़ी बूटियां पैदा करके देश को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद माननीय ब्रिजलाल जी। माननीय विजय साई रेड्डी जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, before they say Dhanyavad, I will conclude it in 2 minutes, sir. Please. Sir, I, on behalf of my You are party, always brief and to the point. Sir, Vijay Sai Reddy. I raise to support the bill, sir. Sir, one of the objectives of this bill is to simplify the patent application procedure. Sir, but it has been flagged repeatedly. Then is the lack of coordination between the patent office and National Biodiversity Authority, sir. And Honorable Minister, I would like to bring it to his notice also, sir. NBA is an autonomous body, works under the Ministry of Environment and Forest, Bhupendra Yadav ji, sir. Sir, while the patent office operates under the control of Ministry of Commerce and Industry. Sir, the two agencies function independently of each other, and there is, I don't say that there is no coordination, there is no linkage between the two, sir. Sir, as a result, the applicants who files the application, they keep going back and then forth between the two forums, and then getting the things delayed, sir. Sir, additionally, there is no data available as to how many biodiversity patents have been approved by NBA and granted by patent office. Sir, the next point and the last point, sir. Sir, India accounts for 7 to 8% of the world's recorded species and home to 96,000 species of animals, sir, and 47,000 species of plants. Sir, I'm a plant lover and also animal lover, sir, for the information of our minister, sir.
and I have my own animal husbandry thing, sir, and nearly half of the world's aquatic plants, sir. Sir, India has 4 of 34 global biodiversity hotspots, and now we have completely lost them, sir. And I request the Honorable Minister to restore them immediately. In the state, sir, in my state, Andhra Pradesh, we have centuries-old systems of indigenous plants to heal the diseases, particularly West Godavari district, Lankamalleswara Wildlife Sanctuary, Simhachalam Hills, and then several other, that is Tirumala Hill. And several other regions are home for this plant, sir. Sir, despite the vast biodiversity of our country, a meager 7 crore is spent annually towards this biodiversity conservation in the entire country. I request the Honorable Minister to increase the budgetary grant and spend more on this to for future generations to know and to preserve our valuable biodiversity. Sir. Thank you very much. Thank you. माननीय मंत्री जी का जवाब. Thank you very much, sir, to providing me opportunity to speak on this subject. First of all, I thanks to all the members who have patiently stayed for a long time to discuss on this subject. I want to thank Surita Devji, Bhuvanesh Kalita ji, Ayodhya Rami Reddy ji, Vasan ji, Shri Ram ji, Brajlal ji, and V.S. Reddy ji for their contribution in this debate. Honorable Sir, we know that the India being a party to the Convention of Biological Diversity adopted in 1992, and after that the Earth Summit enacted and Biological Diversity Act 2002 was implemented by the government for achieving the mainly 3 objects. First, conservation of biological diversity. Second, sustainable use of its component. And third, fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of biological resources. And we are continue working on that. Then the question is, why this amendment and what is the purpose of amendment in the present act? As we know that we are having a 3-tier level system to protection of the biological diversity. At the national level, we are having a National Biodiversity Authority. State level, we are having a State Biodiversity Authority. And the local level, we are having a Biodiversity Management Committee. The present act provides a mechanism for assessing of biological and genetic resources and sharing of benefits in fair and equitable manner arising therefrom with Biodiversity Management Committee and benefit claimers. With this present amendment, I think that we are providing more mechanism, especially to our tribal people or local people. They have a vast knowledge of this tradition, and especially we want to promote Ayush and Ayurveda. And for that purpose, we amend this present Biological Diversity Act to achieve this object. That's the reason with this present amendment, we are simplifying and streamline the reduced complaint burden and encourage conducive environment for collaborative and research and investment. That is the first object. Second is simplify the patent application process. And patent is not only for the biodiversity, the other also. Tomorrow engineering people say our patent, you create our patent office. Tomorrow other the science and the chemistry, they say you create our patent office. So patent authority is one. Those who are in this field also, they are also apply in the patent office, but how we simplify the system. That is the object of us, and it's a government department and they coordinate in that manner that more and more patent we allowed in this field. And the third thing is widen the scope of levying access and benefit sharing with local community. That is the main object, and to further conservation of biological resources. And that's the reason with the present amendment and after talking with the stakeholders or concerned person, the present amendment aims to reduce the pressure on wild medicinal plant by encouraging cultivation
of medicinal plants and removing the ABS compliance burden on the Indian industries. That is the worst thing. Second thing, exemption of codified traditional knowledge from the purview of the Act for Indian companies. So we want to promote more and more Indian companies, and we want to protect the traditional knowledge also. Third thing, prior to this amendment, there was a very difficulty to the Indian companies to clubbing with the international organization, academicians and researchers. And with this amendment, we are aligning the provision with the Companies Act 2013 with regard to the definition of Indian and foreign company for attaching more foreign investment in research and commercialization. It is also an object of this amendment to facilitate fast tracking of patent application process of Indian company without compromising the national interest and other international agreement where India is a party. Our also object of this amendment to decriminalize offences by opting for civil wrong in place of criminal offence in order to reduce the fear among the stakeholders for effective compliance. With this amendment, the state government unable to develop strategies and plans for conservation and sustainable use of biological diversity, enhance the flow of funds to the conservation of biodiversity, and simplified the administrative matter of the Biodiversity Management Committee operating at grassroots level. माननीय सभापति महोदय, अभी दो विषय यहाँ पर उठाए गए। पहला विषय जो हमने पावर दी है जॉइंट सेक्रेटरी को और इक्विवेलेंट अधिकारी को जो पावर दी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहीं भी जुडिशियल रिव्यू से अलग नहीं है। अगर आप अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे सेक्शन 55(3) में, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई अगर पावर को गलत तरीके से उपयोग किया है तो फिर वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगी। सेम पावर इनकम टैक्स में और बाकी जगह अधिकारियों के पास रहती है। बाद में फिर अगर उसमें किसी प्रकार का कोई एरर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, तो वो एक जुडिशियल प्रोसेस हमने, और उसमें भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी अपीलेट अथॉरिटी का प्रोविजन हमने दिया है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय पर एक, चूंकि एक कमर्शियल विषय है, कमर्शियल विषय से हमें डीक्रिमिनलाइजेशन करने का उद्देश्य यह है कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बने। हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, अभी हमारी जो उड़ीसा से सुल्ता देव जी बता रही थी, उड़ीसा में हमारे पास सिमरीपाल, सतकोशी और बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास पूरा एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। तमिलनाडु में भी तिरुपति, आंध्रा में तिरुपति जी का तो पूरा वेंकटेश्वर का पूरा बायोडायवर्सिटी एरिया है। केरला में भी हम जाएंगे तो पूरा साइलेंट वैली का एरिया हमारा पूरा बायोडायवर्सिटी का बड़ा एरिया। अरुणाचल में जाएंगे तो पाके का हमारा बड़ा एरिया बायोडायवर्सिटी का एरिया है। अंडमान निकोबार में बायोडायवर्सिटी का एरिया है। अगर मध्य प्रदेश में भी आओगे तो पूरा जो सतपुड़ा की रेंज है वो हमारा बायोडायवर्सिटी का बड़ा एरिया है। उत्तराखंड में भी जाएंगे तो हमारी जो घाटी, फूलों वाली घाटी, हमारा एक बड़ा बायोडायवर्सिटी एरिया है। ऐसे एरियाज की हमने पहचान भी करी, लेकिन बायोडायवर्सिटी एरिया में ये होने के साथ साथ भी हमारे देश में मेडिसिनल प्लांट को घर में लगाने की, कल्टीवेटिंग करने की एक परंपरा रही है। आयुर्वेद हमारे यहाँ जीवन पद्धति और पूरा कोडिफाइड है। ये जो वर्मा जी अभी कह रहे थे ये ठीक नहीं है, हमारे पास पूरा कोडिफिकेशन है, हमारे पास सब वनस्पतियों का कोडिफिकेशन है। और मेरे मंत्रालय में और हमारे को इस देश पे गर्व है कि हमारे पास एनिमल और स्पीशीज की जो टेक्सोनॉमी है उसको लेकर के ZSI जैसा इंस्टीट्यूट है। आप तो रेड्डी जी 96,000 बता रहे थे, ZSI के पास अभी उनके टेक्सोनॉमी में 1,06,000 स्पीशीज का टैक्स उनके पास अवेलेबल है, जितना हमारे टैक्सोनॉमी में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। और उसके साथ प्लांट के लिए भी हमारे पास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जिसको हम मिष्टी कह रहे हैं, मैंग्रोव सीशोर अलायंस फॉर इंटेंजिबल इनकम, और ये दुनिया भर में इसका सराहा गया। और अकेले हमारे BSI के अभी मैंने देखा था मैंग्रोव्स की उन्होंने 500 किस्मों की उनके पास टेक्सोनॉमी का रिकॉर्ड है। इसी के साथ इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत धरोहर कार्यक्रम शुरू किया। हमारी 75 रामसर साइट्स को हम लेकर के आए क्योंकि ये भी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा काम करती है। और इस समय जब 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो पिछले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पे प्रधानमंत्री जी ने
पूरी दुनिया को एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात दी थी, तो हमने अपने बायोलॉजिकल जो एनबीए है, नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी की, उनको हमने टारगेट दिया कि ये जो लोकल मैनेजमेंट कमेटी बननी है, इसको भी आप मेरी लाइफ ऐप पे चलाओ, और लगभग 1 महीने में 10,000 से ज्यादा गांव में हमने इसको ऐप के ऊपर करा है। अभी हमारे मंत्रालय ने जो हमारी नेटिव स्पीशीज है, मतलब नीम से लेकर के और जामुन से लेकर के, ये सब हमारे फल और हमारे पेड़ पौधे, पर सबके अपने अपने मेडिसिनल वैल्यूज हैं। हमने इसके लिए पूरा एक लिटरेचर प्रकाशित किया है और हर गांव तक ये जो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है इसको बनाने का काम किया है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जब हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ उसका संवर्धन, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज का संवर्धन, उसके द्वारा रोजगार को खड़ा करना और रोजगार के द्वारा भारत के ट्रेडिशनल ज्ञान के साथ दुनिया को जोड़ना, इसके लिए जो सामयिक आवश्यकताएं थी, उसके लिए हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में संशोधन लेकर के आए हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सभी स्टेक होल्डर से, राज्य सरकारों से, मंत्रालयों से व्यापक विमर्श किया। जनजाति मंत्रालय से हमने पूरी तरीके से व्यापक विमर्श किया, कैसे हमारे ट्राइबल्स को इस ट्रेडिशनल नॉलेज का फायदा पहुंचे, उन प्रावधानों को हम इसके अंतर्गत लेकर के आए हैं। और इन सब प्रावधानों को लाने के बाद आज लोकसभा ने भी इसको स्वीकृत किया है, और हमारा यह मानना है कि कमेटी ने जिस विस्तार के साथ अपने सुझाव दिए, उसको भी सरकार ने पूरी तरीके से स्वीकार किया है। और ये बिल आज अपने एक संशोधित स्वरूप में भारत के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, हमारे ट्राइबल लोगों के एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोसीजर बनाने के लिए, डीक्रिमिनलाइजेशन को निकालने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को करने के लिए, और सबसे बढ़िया जो पूरी दुनिया मानती है कि सस्टेनेबल यूज के लिए प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल मिशन लाइफ, उसको मजबूत करने के लिए अमृत काल के भारत के लिए ये बायोडायवर्सिटी का कानून हम संशोधन के साथ लाए हैं। और भारत न केवल नगोया ट्रीटी का भागीदार है, बल्कि उसके साथ ही साथ पिछली बार जब मॉन्ट्रियल में कॉप हुई, कॉप 15 में, तो जो एचई डिक्लेरेशन जो थे, उस एचई डिक्लेरेशन के बाद भारत ने जो मॉन्ट्रियल कॉप हुई, उसमें दुनिया के जो बायोडायवर्सिटी के लक्ष्य तय करने के लिए अपने पूरे योगदान को दिया। हम मल्टीलेटरल लेवल पर दुनिया के उस योगदान में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन हमारा मानना है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत जो सीबीडीआर के दुनिया का प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मानते हुए अपने पर्यावरणीय सुरक्षा को करते हुए अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। उसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संशोधन हम लाए हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा, ये संशोधन जो देश के गरीबों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, हमारे आयुष के लिए, आयुर्वेद के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, रोजगार के लिए लेकर के आए हैं, ये संशोधन जो प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के विषयों को पूरा करने के लिए लाए हैं, ये संशोधन जो अमृत काल में भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज को दुनिया के सामने स्थापित करने में सक्षम करने के लिए लाए हैं, उसको पूर्ण सहमति के साथ पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। The question is that the Biological Diversity Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 43 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 43 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Bhupendra Yadav to move that the bill be passed. माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.
Honorable members, please. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 1st August 2023 passed 1. The Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. 2. The Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023. And 3. The Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 2nd August 2023.